Everybody, welcome to the orientation of Encash Your Wisdom. Encash Your Wisdom is basically a program device to help you heal yourself and then further on heal the world around you. So concept simple है, पहले अपने आप को heal करना और फिर जिंदगी में दूसरों को heal करना. This program is not meant for everybody. 1 minute, hold on. I guess this is better now. I've just changed my network. So, Encash Your Wisdom एक ऐसा program है जो सबके लिए नहीं है. It is for a limited group of people who truly want to, change their lives, transform their lives. But not only transform their lives, जिनका एक vision है कि भाई हम अपनी जिंदगी को change करें और फिर आगे as a life coach, as an energy therapist, we move ahead and we change lives of other people. So here we are like, most of you have come from the Ho'oponopono sessions and other bigger sessions. So like Encash Your Wisdom is a very, very, very private, very intensive and a very small workshop in terms of number of people. Isme jitna content hai, that content is perhaps the vastest out of any of my programs that I'm doing right now. But isme the number of people who are participating every year is very, very limited because it is only for those people who want to transform and who are very stubborn, who are very, very stuck that, I deserve a better life and the people around me deserve a better life. So whatever we are going to discuss for the next 40-45 minutes, I want you to be very clear about one thing. Don't focus on the logistics. Focus on the need first. Logistics is one thing jo workout ho sakte hai. Why? I'll tell you my story. When I went into my life coaching program, the fee of the program was about 3.5 lakhs for 1 year. And there were 4, compulsory retreats that we had to do. The cost of each retreat was approximately 1 lakh with airfare and everything. So kitna hua? 7.5 lakh rupees. It was almost approximately 7.5 lakhs of rupees. And at that point of time, I did not have 2,000 bucks. My business was not working. My husband's business was not working. Kuch kaam nahi kar raha tha life mein. Us time par, the one thing that my mentor told me was, if you have the will to create the workshop, just the will to create the workshop, not the will to create money, you will be able to create the workshop for yourself. So trust me, when I went in for the workshop, the only thing I knew was that I have to go there for 1 year and I have to pay this huge bombastic amount, which was just not possible at that point of time. So I went into it. We set up an EMI, monthly installment, and एक time पे ऐसा लगा पे नहीं होगा. वाकई में नहीं हुआ. We couldn't pay it immediately. At the end of the workshop, I had sold off all my silver and gold coins. I had kind of diluted all my mutual funds, my FDs, everything. But one thing I know today, at the end of the workshop, whatever I had created was much beyond that money that I had spent. And whatever, trust me, I did not have 7-8 lakh rupees worth of gold, silver, or mutual funds. So wo to 2.5 lakh rupees tha. The rest came from my own personal income. So where there is a will, there is a way. Don't manifest money, manifest what you want to create out of that money. So logistics pe abhi focus mat karna. The first thing you need to focus on is whether this workshop is for you or not. Okay. We can always take the logistics from there.
Do we need this workshop? Will this workshop add value for me? Is this workshop going to take me places? Will it add value to my personal life? Will it add value to my family? And will it help me move beyond my own self into my professional sphere? If this workshop fits into those niches, then logistics are secondary. Remember one thing, paisa kama sakte ho, you can always earn money. But the two things you can't earn in life is effort, time, and opportunity. So don't focus on time, paisa, ye 1 year commitment. Focus on what you are here to learn. And then we'll talk about the rest. Everybody with me on this? Yeah. So you all can unmute. Chota group hai, we're only about 42 people. So we can have a very interactive session. Interactive session hota hai to maza aati hai. We also know, I will also know what exactly are you looking for. So how many people over here, apart from my current Encash students, so we have 5 of my current batch students here, unko chhod karke, how many of you want to be a part of this? No, how many of you are here because personal need hai? How many of you are here because professional need hai? And how many of you are here because they would like to create something personally and then move towards a professional, practice? So can you all put it on the chat for me? What is there in your mind when you're sitting here? क्या purpose लेकर आए हो आज? इसको personal use करोगे, professionally use करोगे, कैसे use करोगे? I would like to know that. Please put it on your chat. And cash students, I already know why you want to be a part of it, so no need to put. So thank you, Lena, and yes. Overall growth, personally first, personal, professional and personal goals. Great. So we have a kind of a balance going on. Half the people want to do it professionally or half personally. So number 1, this workshop is led in Hindi and English mix. ये मैं इसलिए बता दूं because जिनको ये लगता है everything will be in English, वो भी गलत है, और जिनको लगेगा 100% हिंदी है, वो भी गलत है. But at the end of every class, you will be in 100% clarity of what you have learned, regardless of the language. And this I will clarify right now very, very categorically, because understand one thing, language is never a barrier. Words have energy. हमें वो energy महसूस होती है. We pull in that energy. We absorb it and we function accordingly. So what your conscious brain cannot understand, your subconscious brain will pull it in. And जिन्हें लगता है ना हम सिर्फ personally करना चाहते हैं, we want to transform our life, I can make a big commitment to you today. If you join this program, at the end of 1.5 years, you will say, Sweta, personal हो गया, professionally कैसे launch करें ये बता दो. That is my guarantee. Because by the end of 1 year, you will transform to a level where people will come and ask you, what did you do to your life? How did you change? And can you help us bring that same thing into ours? That is my commitment to you. So let's move ahead. मुझे एक चीज बताओ. Life में अगर हम बात करें problems की, so what are the problem areas of our life? Unmute, everyone, one by one, unmute and share. Health, finance, career, relationship. Okay. Who else would like to add? Health, wealth, finance, career, relationship. और क्या होता है life में? What are the other problem areas? Fear, self-doubt. Relationship issues. Relationship issues, self-doubt. So self-doubt को हम relationship with ourselves में. Can we bring self-doubt into relationship with ourselves? With relatives, in fact. I'm sorry, Shriki, can you just repeat? With relatives. Relatives. So relationship issues. Yeah. Problems Next with thought. relatives. Okay. Next thoughts, madam.
नेगेटिव थॉट्स. सो थॉट्स आता है कहाँ पर? माइंड में. अगर मैं ये चार्ट दिखाऊं आपको, सो can we put it like this, that this chart actually has all your problems put in? Am I missing out on anything? So it says we have problems of finance, mind, physical body, emotional issues, spiritual issues, भगवान से connect नहीं होता, intuitive connection नहीं होता, relationship issues with ourselves and with our relations, family members and others, psychological health and social health. कुछ बचा? Have I left out on any category? Overthinking. Overthinking is a concept of mind ना, तो mental health में आएगा. क्या बोले आप? फिर से बोलिए. Confidence. Self confidence comes in spiritual health and emotional health. Ma'am, management and organization, like if you're not good in managing stuff or organized. Psychological health. Okay. I think I have covered everything. No. आप लोग बोलो, because see, understand one thing. जिन चीजों को हम बहुत सारा समझते हैं, वो सारी चीजें इसी में involved है. But if you don't understand how, you are going to get stuck. And by the way, this is not a PowerPoint presentation made for this orientation. This is my class content. This content comes from my class. Okay, madam. मैम एक क्वेश्चन. One by one, please. मैम जैसे हम लोग बहुत कुछ करते हैं सबके लिए, पर वहां से रिस्पॉन्स करते रहो, कब तक करें मैम? Mental and emotional health में आएगा. Repeated old beliefs. Sorry? Old beliefs. Mental health. Shrikesh ji? Madam, blocks in fulfilling our desires. Mental and emotional health. जिंदगी में सब कुछ इस पिरामिड में निकल के आ गया है. This is your space. This space is yours. Just one second. Admin, can you please come and take this phone from me? This phone is ringing. Somebody is calling up repeatedly. Please, somebody come into my space and take this phone. This is disturbing me now. So, I, me and myself कौन है? Me, my life and my own body. और उसके ऊपर आता है finance, mind, emotion, physical body, relationships, spiritual health, psychological health, and social health. Social health matlab, Shrikesh ji, like you said, problem with relationships. That will come in social health and in relationship health. Kyun? Because social acceptance starts from your own personal relationships. So देखा जाए तो जितनी हमारी एक बवंडर of problems है, that we have a Pandora's box. Remember what was the Pandora's box? Everybody remembers the story? No, who doesn't remember? Kiran Khurana ji doesn't remember. Shrikesh ji doesn't know. Mitu ji doesn't know. Okay, so chalo Pandora's box से start करते हैं. जिंदगी में एक time पर there was only happiness and joy. There was enough to eat. There were no sukhas. There were no droughts. There were no epidemics. There were no pandemics. We were living in an ideal, perfect society. There was no crime. There was no pain. कुछ नहीं था. At that point of time, somebody, chaos, जिसे कहते हैं ना name, chaos, confusion. So chaos is basically supposed to be the god, a Greek god of confusion and negativity. So he was actually known as Chaos. The spelling is K-A-O-S. So Chaos gave Pandora a huge box. And he told her, isko kholna mat. You will not open this box. This box is full. This box has nothing important. Kholna mat. No matter what you do, don't open this box. But desire, the desire and the curiosity to know made her open that box. So the minute she opened the box, disease, conspiracy, frustration, irritation, anger, all the negative attributes of life came. Psychologically, mentally, all the thoughts, all those aspects which we don't want in our lives, but which are playing such a huge role, started coming out and spreading out into the world. And the only thing that got left inside the box was one tiny spark of hope. Ummeed.
And that is why it is said curiosity killed the cat and उम्मीद पे दुनिया कायम है. Because it is our own infinite, unlimited desire and curiosity for I want this, whether it is good for us or not, that takes us into a negative, I would say, not always, but many times into a negative space of our lives, whereas it is only the hope for a better tomorrow that makes us stay here and fight all that comes our way. So the Pandora's box is basically a representation of all that doesn't work in our lives, of all that is not positive in our life. So you can say that you have a Pandora's box of psychological issues, mental issues, emotional issues, of negative thoughts, negative patterns, negative karma. But beyond that, at the bottom of that Pandora's box, there is faith, vishwas, there is hope, ummeed. And there is a very staunch soul which holds on to the divinity within you and says, you can fight it. So in a way, what cows gave to the world was total pandemonium, chaos, and confusion. But at the same time, he also gave something which we often overlook. It is hope. So in all this huge Pandora's box of problems that each one of us has, we also have the ability to work around them, heal them, release them, and delete them. But remember one thing, no matter whatever we do, kuch bhi hum kare, everything, all our problems are limited within the perspective of these 8 parameters. In 8 parameters में सारे issues हैं. वो इन्हीं 8 categories में आएंगे. There is nothing beyond till date which I feel I have left out. Perhaps we will realize it at a later stage. But now tell me one thing, if I ask you, ये problems represent कैसे होती हैं? How does a mental issue or a mental health issue represent in our lives? How does a relationship issue represent or take form in our life? हम कहते हैं ना manifestation होता है. Suppose करो एक आलू और प्याज को डालोगे तो आलू की सब्जी बनेगी ना. If you take together onion, tomatoes and potatoes, you get aloo ka sabzi. So what is the manifestation of any of these issues? How do they manifest? Where do they manifest? Emotions. Emotions, very good. Where else do they manifest? Frustration. Frustration is an emotion, Shrikesh ji. Okay. So what Mind. is emotion? Second. Mind, excellent. Intellect. Negative thoughts. Negative thoughts kahan pe aata hai, Preeti ji? Mind. So intellect, mind आ गया ना. दो option, दो चीजें और आती हैं. How do you, where does all of this manifest? Mind, emotions, दो और. There are 2 more aspects. Obviously, Body. Health. Wait, 1 minute. Shrikesh ji, yes, what were you saying? Yeah, obviously, finally it comes to health only. Health. So physical body, excellent. Toshi aunty, Shrikesh ji, very good. Physical body. चौथा, 4th aspect, भूल गए. Very important. Beliefs. Mental. अरे बाबा, mind हो गया. Emotion, minds and physical body हो गया. चौथा, Relations. relations में नहीं आता. Relations are a aspect of energy. Energy कैसे आती है? How? What is the source of energy in you? Sandhya Shri. Breath. Visualization. No. Belief. Soul. अरे बाबा, अभी मैं पूछती ना spirituality का मतलब क्या है, तो सब कहते soul. Atma, spiritual health, spirituality, your own soul, it affects your soul. So no matter what you go through in your life, whatever problems you are facing is only represented in 4 spheres. 4 जगह पर आएगा predominantly. The physical quotient, the intellectual quotient, the emotional quotient, and the soul quotient. And this is a very important aspect. ये screen आपको दिख रही है ना, circle वाली? So this becomes a very important aspect for us to understand how to deal with things. अच्छा, किसने कहा था अभी negative thoughts? Negative thoughts किसने point बताया था? Please raise your hand to me. Yes, Preeti ji, unmute करो एक बार.
Preeti ji, tell me, apart from where will your negative thoughts come into play? How will they play? Continuous वो thinking, Continuous thinking or overthinking. overthinking और अच्छा So- मुझे बताओ, जब overthinking होता है तो और क्या होता है अंदर? What happens within you? Negativity develops. Negativity develops how? Does it develop in your words? Does it develop in your actions? Does it develop in your emotions? Where does it develop? Emotions. Emotion. Action. Action. Same. Action. Emotion. Words. Words. Perfect. So एक चीज सोचो, नेगेटिव थॉट आया माइंड में, उससे क्या क्रिएट हुआ? नेगेटिव इमोशन, यानी कि इमोशन अनम्यूट, ये म्यूट कर लो जो भी भागी जहां से दिख रही है भाई एक बार के लिए। सो वहां पर हमारा इमोशनल क्वोशंट इफेक्ट हुआ। द मिनट इट इफेक्ट्स एंड टेक्स प्लेस इनटू आवर एक्शन, वो नेगेटिव थॉट एक्शन में आया, फिजिकल बॉडी इफेक्ट हुई। एक्शन कहां से लोगे? बॉडी से लोगे ना, शरीर से लोगे। नाउ वेयर विल दिस नेगेटिव थॉट गेट स्टोर्ड? ये रहेगा कहां पे? इसका घर कहां है? ब्रेन में। और ब्रेन का घर कहां है? ब्रेन का सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड कहां है? बॉडी में मैम। मौसमी म्यूट पे हो, अनम्यूट करके बोलो। सोल में। नो मैम, फिजिकल बॉडी। Physical body. Perfect. Physical body. Your mind is in your body. So where is it getting stored? In your body. इसका मतलब physical health affect होगा कि नहीं होगा? यस मैम। अब जब एक्शन में आ गया, थॉट में आ गया, इमोशन में आ गया, बॉडी में आ गया, तो क्या ये नेगेटिव थॉट कर्म बन गया? कर्मा यस मैम, कर्मा क्रिएट हो गया एक तरह से हो गया। अब जब कर्मा क्रिएट हो गया तो ये सोल क्वोशंट पे पहुंच गया, अगले जन्म में भुगताओगे। तो एक प्रॉब्लम चाहे किसी भी लेवल की हो, इट विल गो एंड इफेक्ट ऑल 4 एरियाज ऑफ योर लाइफ। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी को? तो प्लीज मुझे बताओ। मैडम इंटेलिजेंस लेवल, इंटेलिजेंसी पे कैसे इफेक्ट होगा इसका? अरे यार, आपकी इंटेलिजेंस तो आपका ब्रेन है ना, अब ब्रेन में ही नेगेटिव घूम रहा है। कहते नहीं है विनाश काल विपरीत बुद्धि, खाली दिमाग शैतान का घर। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, देयर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट लाइफ इज, जितने ये पुराने दोहे, कहावतें, श्लोक, चौपाइयां होते थे ना, ये बिल्कुल बैंग ऑन एक्यूरेट थे। However, we've forgotten how to connect them with life. Now we connect them with religion. But इनके मीनिंग को समझो और अपनी जिंदगी से अप्लाई करो, you will understand one thing, 100 on 100 accuracy in terms of life and in terms of applicability to life. तो जिंदगी में वापस अपने वेदों की तरफ आना शुरू कर दीजिए, बिकॉज सारी जिंदगी का आंसर यहीं पर है। It is not there anywhere. एंड जो लोग वैसे एनकैश स्टूडेंट्स जानते हैं कि हम इस वर्कशॉप में आर बेसिक कॉन्टेक्स्ट एंड विजडम इज वैदिक बेस्ड, मेथोडोलॉजीज आर साइंटिफिक। सो वी क्रिएट अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैदिक विजडम विद साइंटिफिक मेथड्स, ताकि दोनों लेवल पर हम अपने आप को बैलेंस रख सके। दिस इज नॉट अ स्पिरिचुअल कोर्स, दिस इज नॉट अ साइंटिफिक मॉडर्न डे कोर्स, दिस इज अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन द एंशिएंट ट्रेडिशनल वैदिक साइंसेस concepts and the modern day scientific western concepts. So what you're getting is 2 + 1. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। So देखा जाए तो हमारी प्रॉब्लम एक पैंडोरास बॉक्स से शुरू होती है, which is this pyramid of issues, lands up affecting 4 core areas of our life: mind, body, soul and emotions. लेकिन देखा जाए तो एक ऐसी लाइफ हमें मिली जहां पर हम लोग क्या थे? तो हम क्या शरीर थे? वह भी बॉडीज नहीं ना। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द यूनिवर्स टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम, हैव वी ऑलवेज बीन इन दिस फॉर्म? हम इसी रूप में रहे हैं? नहीं ना, we've always had different multiple forms of being. अच्छा चलो एक काम करते हैं, लेट्स डू अ स्मॉल एक्सरसाइज। आई थिंक दिस विल गिव यू अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ टू कनेक्ट। क्लोज योर आइज एवरीबॉडी। 2 मिनट के लिए अपने अपने
फोन्स और स्टाफ को बोल दो आपको डिस्टर्ब नहीं करें, एंड क्लोज योर आइज प्लीज, सिट स्ट्रेट, क्लोज योर आइज. Now I want you to start breathing in deeply. Deep breath लेंगे. Pull the breath down to your root chakra. Visualize करें root chakra तक breath को जाते हुए. And very slowly exhale. Again, take a deep breath in. And release. Slowly and steadily, I want you to visualize the world rotating and spinning around you. दुनिया को अपने चारों तरफ घूमते स्पिन करते देखिए. And as the world starts spinning, I want you to see the time moving back. समय को पीछे जाता हुआ देखिए. 2022, 2020, 2010. कोई भी distraction है, just let it be a part of this trance. कोई sound, कोई irritation, कोई itching. Allow it to take you deeper into the state of trance. दुनिया को पीछे घूमता हुआ देखिए. 18th century, 17th century, with each circle, समय पीछे जा रहा है. हर चक्र के साथ समय पीछे निकल रहा है. Slowly, I want you to go back to the time when there was nothing. There was no universe. There was no world. There was no earth. सिर्फ एक अंधेरा था, एक अंधकार. और उस अंधकार के पास जाइए. Move towards that emptiness. जाके देखिए उस अंधकार के नीचे क्या है. ये comfortably warm है. It is not cold. It is not hot. It is like a water, a body of water. एक समुद्र के तरह है जो शांत, शिथिल, स्थिर है. और सिर्फ एक छोटी सी धड़कन है. One tiny little beat of consciousness. Go deep into that moment, into this water, towards that consciousness. और इस consciousness के पास धीरे धीरे अंदर ही अंदर पानी के जाते जाए. What does this consciousness look like? क्या इसका कोई रूप स्वरूप है या फिर सिर्फ एक अदृश्य एनर्जी की तरह ये वहां एग्जिस्ट करती है? Now, see there is a little change. थोड़ी सी change है उस consciousness में. A little awakening. और मानो आपके मन में एक क्वेश्चन आता है. ये क्वेश्चन आपका नहीं है. This question belongs to that conscious energy. Who am I? मैं कौन हूं? How great am I? मैं कितना ग्रेट हूं? What are my powers? मेरी पावर्स क्या है? And as soon as these questions arise in your mind, और जैसे ही आपके मन में ये सवाल आते हैं, there is a huge blast of light. एक बहुत बड़ा नाद होता है. मानो ओम से पूरी सृष्टि, पूरा ये अंधकार
गूंज उठा है. And with that frequency, with that sound, there is a huge blast of light. हर तरफ रोशनी है, ऊपर नीचे दाएं बाएं. And you see the universe being formed. और सृष्टि को बनता हुआ देखिए. Planets, stars, celestial bodies, moons, multiple universes. Everything starts coming out. Full of fire, moving with strong velocity, going forward, 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 till they reach and take the place where they are meant to stay for the rest of the eternity. और ये तब तक ब्रह्मांड में घूमते हैं जब तक ये अपनी सही जगह पर पहुंच नहीं जाते. वो जगह जहां समय के अंत तक ये घूमेंगे और अपना कार्य करेंगे. And now in one of these planets, in one of these galaxies, I want you to see your soul being born for the first time. और कहीं किसी गैलेक्सी में, किसी सोलर सिस्टम में, किसी यूनिवर्स में आपकी अपनी आत्मा पहली बार जन्म लेती है. वो ईश्वर का अंश जिससे आप बने हैं, उस ईश्वर के अंश को देखिए. सी, फील. नहीं दिखता कोई बात नहीं, महसूस करिए. नहीं महसूस होता, सुनिए. हम सबका एक साइकिक सेंस बहुत स्ट्रांग है. यूज दैट साइकिक सेंस. फील इट, सी इट, स्मेल इट, टेस्ट इट और हियर इट. अपनी आत्मा को पहचानो. वो आत्मा जो पहली बार इस ब्रह्मांड में जन्म ले रही है. How does that soul look? Feel? कैसी लग रही है वो? कैसी महसूस हो रही है? उस आत्मा की एनर्जी का कलर क्या है? और फिर धीरे से फिर से समय घूमने लगा. Things start turning once again. और हर स्पिन के साथ आप अपनी एक लाइफ टाइम को देख सकते हैं. You can see one lifetime with every spin and every circle. And as you see that lifetime, also see the problems, the karma that was created. और हर स्पिन की, हर लाइफ टाइम के साथ ये भी देखो क्या प्रॉब्लम आई, क्या क्रिएट किया, क्या कर्म लेकर पकड़ में रखा, क्या क्रिएट किया हमने, जो आज की हमारी रियलिटी ऐसी है. Allow each spin to take you through lifetimes, across the galaxies, across multiple universes, parallel lifetimes, parallel dimensions, till you reach this moment where we are sitting now. And when you reach this point where you are sitting in this room, attending this session, I want you to gently rub your hands together, put them on your eyes, and come back. How many of you could not see anything? किस किस को कुछ महसूस नहीं हुआ, कुछ नहीं दिखा? Raise your hands, please. Guys, cameras off हैं, या तो cameras on करिए या मुझे chat में बताइए. और जिन्हें नहीं दिखा, नहीं समझ में आया, it's okay. This is your first attempt at something as deep. It's perfectly fine. जिन्हें दिखा, would anybody like to share? Those who could see, feel, would you like to share? I could see total black and in between that consciousness in white. Excellent. White. But everything is black, I could see. But in generally, it is said
consciousness is light, no? No, not necessarily. When there was nothing, there was actually nothing. There was only darkness. Once upon a time, before the universe was created, there was nothing except darkness. And in that darkness, there was one little light of consciousness, which is the supreme creator. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं आदि शक्ति या परब्रह्म, आदि पराशक्ति परब्रह्म, that is the consciousness which is beyond all the avatars and incarnations of God. Okay, okay. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, Abhaji, you've raised your hand. Abha Kanchan. I can't hear you. Can you please share? It was not working. Abhaji? Now you can hear me? Yeah, now I can hear you. I'm sorry, I'm not putting on the camera. I have sore eyes. Please go ahead. Yeah, what I saw was when I went into the sea, I actually saw a figure. I saw a sadhu wearing bhagwa with long white beard and a turban, wearing all rudraksh, and had a very peaceful, peaceful thing, not smiling, not sad, just a peaceful face. And then when you said the universe was born, and then when I took a birth, I was born as a boy, and I was a prince. And I was like, with all the ornaments and all that, I was born very happy and all that. But maybe in that, I was like happy and ruling. That was good. But second, I could see only two girls. And after that, next life, I was a girl. Then I was like, middle class, or you can say that coins. And I was not happy. I had the feeling that I did something wrong while I was ruling. So that is why I got this life. Okay. That much I could see. Thank you so much. That's more than enough. In fact, that's a very, very, very good start, because itna bhi nahi dikhta. What we did today was something which is very advanced level. In fact, humne in cash mein abhi tak I haven't taken my students there. Yes, I was surprised why I'm a boy, but then I realized we can be a boy or a girl in any You life. can be a boy, you can be a girl, you can be a chuha, you can be a driver, you can also be an alien. So you can be of any community, any figure, any form. Yeah, I think that it takes a long time for that visualization for every. No, it's basically, see, I'll tell you what happens. We can only absorb what we are into. Okay. ठीक है, so जहां तक हमारा mind और soul दोनों ready होता है, वहां तक हम pull in कर सकते हैं. The soul already knows everything. It's just opening it to you in a language that you can understand. Okay. Good. That was great. Great. Thank you for sharing. Yes, Rachna Mundra. Yes. Hello everyone. Thank you for. Rachna, एक मिनट unmute कर लो दोबारा अपने आप को, please. Yes. Hello everyone. Thank you for this group meditation. मुझे वैसे तो कुछ नहीं, but there was lot of light and there was a small dot which was not very clear. It was coming and going, and lot of peace. Thank you for sharing, Rachna. So Vandana ji, if you saw a birth in which human, that's perfectly fine, because हम हर lifetime में humans नहीं हुए हैं. And we have, though you must have seen 1 or 2 births, that's okay. But we have lived many more lifetimes than that. That's okay, Ritu, Dhruti, give yourself a command. I will not sleep. Whatever I see, it is safe for me to see it. Those who did not see, it's okay, perfectly fine. पहली बार कुछ ऐसा कर रहे हो, जरूरी पहली बार first day driving कोई सीख सकता है, नहीं सीख सकता ना? कितनी बार सब्जी जलाई थी सीखते हुए याद है? So it's perfectly fine. Chill, relax, and let it grow with you. You will get there. What about my in-cash students? आज आप लोगों के लिए कुछ नया था. Anybody would like to share there? What command, Dhruti? It is safe for me to see what I need to see. Sweta, hi. Hi, Gitu. Sorry, everyone. इतना late उठा के रखा हमने. नहीं, that's fine. I'm enjoying it because of course जो आज आपने करवाया वो बिल्कुल different है. And hello everyone, my name is Geetu Soni and I am a student of Sweta since I think it's been 2 years.
आज जो आपने एक्सरसाइज करवाई है उसमें आई हैव जैसे जैसे आपने बोला वैसे वैसे मेरे को वो दिखता भी गया। एंड जब आपने कहा कि यू गो इनटू द सी एंड देखो कि आपको वो एनर्जी किस फॉर्म में नजर आ रही है, तो आई सॉ इन द फॉर्म ऑफ लाइट। एंड जब आपने बोला कि गो बैक टू द ईयर्स के फर्स्ट उसमें क्या आया था, तो आई एम इन अ एनिमल फॉर्म। एंड जो अर्थ नजर आई थी मीन्स बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर नजर आया था एज यू सेड बिफोर। एट अ लेटर स्टेज आई जो मेरे को दूसरी लाइफ नजर आई है उसमें आई वॉज मेरे को हेल्थ इश्यूज आए हैं, उसमें बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज आए हैं। देन अनदर लाइफ में आई सॉ माई सेल्फ एज अ वेरी कंफ्यूज्ड पर्सन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी लाइफ में। देन जो लास्ट मेरे को नजर आया है उसमें आई एम अ वेरी एम्बिशियस पर्सन एंड आई एम इग्नोरिंग ऑल ऑफ माई जो भी मेरे आसपास है उनको सबको छोड़ के मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। आई डोंट नो व्हाई बट दैट्स व्हाट आई सॉ। भाई आई डोंट नो व्हाई, अगर व्हाई पता चल जाए तो लाइफ हमारी परफेक्ट हो जाए। सो व्हाई which we can never answer because it's in the past. What we can do is we can simply delete, heal and rewrite in such a way that it doesn't affect our today and tomorrow. देखो लॉजिक, कुछ चीजों का लॉजिक नहीं होता ना। वन क्वेश्चन एवरीबडी मस्ट बी हैविंग, श्रीकेश जी, आई विल जस्ट टेक योर क्वेश्चन 1 minute. सो वन थिंग एवरीबडी मस्ट बी हैविंग इन देयर माइंड, ये हमारे मन का वहम था या ये रियलिटी है? इज दिस आवर माइंड और इज दिस द रियलिटी? Now what I want you all to understand is the soul is your window and connection to everything in the universe. आत्मा निकली कहां से? आत्मा परमात्मा का अंश है. Just like we give birth to our babies, we are babies or parts of the same energy that created this universe. So whatever resides in the main system database resides within us. मदर कंप्यूटर में जो कुछ है वो बच्चा कंप्यूटर में है. We have it. The only thing is our brain, our consciousness, our own thoughts, limitations bind us into not accepting and re-remembering it. Spirituality is not about following the divine path. Spirituality is a path which takes you towards your own soul, which makes you accept the infinite abilities of yourself and live to your utmost potential. मतलब क्या है हिंदी में और देसी भाषा में, बिकॉज ये बड़ा टेक्निकल साउंड कर सकता है. इस मनुष्य योनि की लिमिटेशंस, दायरे और बाउंड्रीज के बाहर जाकर अपनी आत्मा के हिस्से से जीना, एक आत्मा बन के जीना. ये नहीं कि भूत प्रेत बनना है, इसी शरीर में जीना है. I am not telling go commit suicide, become an atma, become a ghost and then live your life. No, you will live in this physical form, but you will move beyond the boundaries and limitations of human form. शरीर से ऊपर उठ के परे जाना है आपको. और जिस मिनट आप अपनी आत्मा के पोटेंशियल को फुलफिल करके जी लोगे, स्पिरिचुअल पाथ आपका है नहीं, आप बन जाओगे सोल. So आज के दिन we are human beings. How many of you function from the space of soul? Soul के space से कौन function करता है? एक जना भी है तो मुझे बता दो. हम नहीं कर सकते. Why? The soul says we are all one. The brain says मैं, you, me and myself, they, them, theirs. The soul says अरे बोल दिया तो बोल दिया यार, जो आ रहा है वो मेरा है. Whatever comes back to me is my law of attraction. The brain says साले तूने किया कैसे? अभी बताता हूँ. घर आज जला हुआ खाना दूंगी आज खाने को. So we can never live from the space of the soul simply because we have become humans in our identity. Here the identity that stays is I am a human being. And then we say I'm a human being who's out on a spiritual journey.
फिर हमें किसी ने बोला स्पिरिचुअलिटी ढूंढनी पड़ती है, तो हम कहते हैं यार मैं एक इंसान हूं जो स्पिरिचुअल भी हूं. The reality of life is we are not human beings on a spiritual journey. We are spiritual beings on a human journey. अगर इस आइडेंटिटी से अपनी लाइफ को देखते हो, so you will understand one thing: this lifetime is only a dhobi ghat for you. It is only a washing zone, a laundry service, where you don't have to launder your clothes, you have to launder your karma. You have to launder your thoughts, your emotions, and your limitations. So if we understand and live our life, understand our life as a soul, you will use this life as a laundry system. If you will see this life as a human being, you will use this life to create more laundry to be washed in the next lifetime. Identity change है. सिर्फ फर्क क्या है? In how we look at things. तभी मैं हमेशा बोलती हूँ, दृष्टि बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी. Learn to look in a different way, things will automatically switch and turn. So understand one thing. We already have all the knowledge of the universe within us. हम ना छोटे छोटे सितारे हैं. We are small stars who are wrapped up in a physical body. If we need to find answers, we only need to go within ourselves. Identify what is there, accept what is there, and move ahead. Who stops us? We stop. हमारे हस्बैंड नहीं रोकते, हमारी वाइफ्स नहीं रोकती, हमारे पेरेंट्स नहीं रोकते, हमारे इन-लॉज नहीं रोकते. The biggest limitation of our own life is me, I, and myself. And what to whom do we point a finger at? My husband doesn't let me go out. My wife does not agree with me doing this. My children stop me, my in-laws stop me, my parents think I'm mad. Let me tell you, half of what I do, nobody knows. Even in my own family, except for my husband. My in-laws do not believe in energy, they don't believe in healing, they don't believe in this world at all. My parents used to not believe, now they believe, because they have ample signs and proof to make them believe. But that doesn't make me stop. Regardless of what people think, my path is to walk. Success के लिए जिंदगी में jump लेने की जरूरत है. Every successful person needs to take a jump, regardless of all the fears and risks they might be taking. Because if you don't take a jump in your life, रोज उठोगे और पता है क्या सोचोगे? क्या मेरी जिंदगी में बस इतना सा ही है? Is my life just meant to be this? So fight ahead with your life. Never give up. Yes, Rikesh, can I have your question or your sharing, whatever you would like to? Yeah, I have two questions. Please. As you said in the final thing, then what is the use of going to a temple and do idol worship? Shrikesh, let me tell you something in life. Humanity is connected with the physical five senses, right? God and divine is invisible. There is no sense of having a God. There is nobody who listens, and there is no Akashvani which says, "Maine sun li tumhari baat." So religion, idol worship, gives us the first connection to divinity in physical form. So you mean gross form? In gross form. Because see, subtle form we can't see. Everybody can't connect to it immediately. Wherever we are journey, it depends on our own consciousness कि हम कितना connect करते हैं. But gross form में connection नहीं होगा, तो subtle form में कैसे connect करेंगे? See, there are two things, no? We've always talked about living from the perspective of being and doing. Being क्या होता है? The state with which we live in. Doing क्या होता है? An action-based state. Ultimately, हमको inner peace चाहिए as a state of being. But अगर मैं day one से बोलूं क्या आप inner peace inculcate कर सकते हो? Can you pull in that inner peace and live like that? No, because you don't know how that inner peace feels, how it makes you feel, how it looks, how it tastes. So the act of doing something to bring inner peace is important to introduce you to the concept. Religion
is a gross system which becomes the first stair that connects you with your core self. And trust me, today's religion is not pure religion, because today's religion is something which creates God, fear against God. It's a God-fearing religion. Religion was meant to be a connection to divine in its corest form, in a form which the human brain can understand. There was nothing like, आप खाना नहीं खाओगे तो भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे, झूठा छोड़ोगे तो भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे. What I told you was that this very grain of food has a divine entity in it, a divine energy in it. So take what you want to consume and consume it with gratitude, even if you don't like it. Accept, consume with gratitude. But then क्या concept बन गया? Fear. ये पाठ करो वरना ऐसा हो जाएगा, आपने ये नहीं किया इसलिए ये हो गया. So from a God-loving religion, we came to a God-fearing religion, which was created by, I would say, politics and different structures. There is no harm in being religious. Just don't make religion your whole and complete faith. Understand religion is the first step towards meeting yourself and the divine. I hope that answers your question, Shrikeshji, the first one. Yeah, exactly. So that means, so can I take it like this, that the energy which you say, it was made to gross form? Yes, it is energy which we see in as gross form, so that our brain and our physical senses can accept and work with them. Okay. Thank you, ma'am. The second question is, as many said that they have seen their births and everything. Is there a chance that mind may create an imagination? The mind will create an imagination if we already have a certain input that the birth is supposed to be like this. Okay, because why I am asking this question is, many times I have gone for PLR with different some other paper. So every time I see different births. Shrikeshji, I'll tell you one thing. I have, this is my 14,700 and something birth. I have seen that many. And I have been seeing my past lives since before I knew what PLR or Akashic record reading was. I used to sit for a meditation with one question, Aaj kya heal karna hai, ye bata do. What needs to be healed? And one lifetime would open with one single incident. My face would be different, my form would be different. I've seen myself as an amoeba, as a skeleton, as a very ganda wala alien, as animals, in every form. And I have seen the incident that was created that needed to be healed. So I, as a person, will tell you one thing. I did not believe in my visions for many years because I did not understand them. But the fact was that the minute I would take care and heal that aspect, work on that aspect which needed to be, I would say reset, my life would change here. So over a period of time, what I have realized that when you are in a trance and when something comes to you without external input means see yourself as a boy or see yourself as a girl, see yourself in this form. These are external inputs which can influence what you see. But if suppose I say go and see one lifetime where the problem of money was created and you start seeing things, that is more likely the reality of what happened. If at the end of that vision, there is a lot of anger or resentment in you for another person, then it is your mind. But if there is acceptance that I created this, even if there is a little sadness, it is okay. That is yours. Now I understand. Thank you. You're welcome. Yeah. So if after that, if we have some heavy emotion, then it could be mind created. Yes. If we have a release from that, then it is a real one. It is our. Thank you. So that is why, guys, aap log ko pata na, I am not a person who really follows PLR, because PLR, I have seen certain cases which have not worked out well. Or certain cases like me, who don't go under hypnotism at all. Brain jata hi nahi hai. The consciousness is so staunchly sitting, it will not move here and it will not there. Okay, let's move ahead. With this soul identity aspect, let me show you one more thing. And please, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये ना ये class 7 या 8 का content है मेरा.
So I hope you all will not misuse it. So when you see one thing, if you see this slide, the soul has an identity which says, I am a piece of God. मैं एक परमात्मा का अंश हूँ. परमात्मा का अंश कैसा होता है? Pure, divine, infinite. Somebody who agrees with all the tenets of divinity. Tenets of divinity मतलब जो भगवान मानता है वो ये आत्मा मानती है. परमात्मा और आत्मा की सोच विचार सेम है. लेकिन जो ब्रेन है, now when that soul enters the human body, जब वो बॉडी में एंटर करती है, तब उसकी बिलीफ क्या बन जाते हैं? Because it gets sorted into 4 aspects of existence. 4 aspects क्या थे? Mind, emotions, body and soul. So उस मिनट क्या होता है? The physical body gives it form and structure. The intellect or the brain उसकी identity क्रिएट करता है, जहां से वो एनालाइज करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, थिंकिंग करता है, एंड जो बाहर से स्टिमुलस मिलता है उसको डिकोड करता है. डिकोडिंग स्टिमुलस सबको समझ में आता है? नहीं आता है? मुझे बताओ. If there's anybody who doesn't understand, please ask me. And guys, switch on your cameras. Otherwise, in the next 2 minutes, I'm switching off mine. They don't understand, Shweta, decoding stimulus. So decoding stimulus is, Shubha, how do we perceive energy? How do we perceive what is coming from the outside world? How do you know? Tell me one thing. I am giving you a certain concept which is very new to you, right? Shubha, are you there? So if I am giving you a new concept, मुझे एक बात बताओ, how do you know this concept is authentic or inauthentic? It is being, I trust. You will trust me. Now trust कहाँ से आया? Yeah. Trust कहाँ से आया? Experience. Experience. So what is happening is when what I am saying is landing in your ears, my face is being seen by your eyes, you are perceiving me with 5 senses. 5 senses हैं. ये 5 में से जो भी उस वक्त का active sense है, right now आपके active senses 2 हैं. Everybody has 2 active senses at this moment. Your eyes and your ears, that's it. Now whatever they are pulling in is going to the brain. Brain वहां से उसको तोड़ता है. It will take out what is relevant and leave what it thinks is irrelevant. Now remember one thing, decoding of stimulus का मतलब है taking out what the brain thinks is relevant, not what you think is relevant. There is a difference. So suppose the subconscious says religion and spirituality is bullshit. You are listening to what I'm saying, but you will leave all the knowledge information that is being shared here and go back home empty. You will only take the scientific tools with you. Suppose your brain says, I don't believe in science. You will only take the religion and spirituality part from here. So decoding of stimulus means absorbing information from the environment, breaking it apart and keeping and basically keeping whatever the brain thinks fits into your system, letting the rest move out. मैम इसको इस बात में भी कह सकते हैं कि हमारा माइंड हमें सुनने के बाद ही देखने के बाद कैसे कमांड करता है, इस फॉर्म में भी कह सकते हैं. सिर्फ सुनना देखना नहीं. देखो जैसे एक रजाई को छूते हो तो मुलायम होती है ना, तो अगर आप टच कर रहे हो तो वो टच के बेसिस पे भी आपको सेम कमांड देगा. आप स्मेल कर रहे हो उसके बेसिस पे भी देगा. क्यों बदबू आती कैसे नाक बंद कर लेते हैं? यस यस मैम. So 5 senses हैं. 5 senses क्या है? Eyes, ears, nose, tongue and touch. Touch, yes, yes. इन 5 से जो भी इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं, ब्रेन उसके अगेंस्ट हमें क्या आगे की कमांड्स देता है, उसको हम कह सकते हैं डिकोडिंग स्टिमुलस. ओके ओके. यस मैम. आई होप ये आप लोगों के सर के ऊपर से नहीं जा रहा है, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी न्यू कॉन्टेंचुअल कॉन्सेप्ट्स. मेरे रेगुलर वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, दे विल बी एबल टू पुल इट इन, बट आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग. जहां समझ में नहीं आए प्लीज रोक लीजिएगा. आई हैड थॉट आई विल नॉट डू दिस, बट समहाउ ऑन मॉर्निंग में मुझे गाइडेंस था कि ये करना है, सो दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग दीस स्लाइड्स.
देन सोल क्वेश्चन जो होती है हमारे अंदर की, इट गिव्स अस द प्राणा, लाइफ एनर्जी, ची जिसे चाइना में कहा जाता है, आवर सोल आइडेंटिटी। इंटेलिजेंस क्या देता है? ह्यूमन आइडेंटिटी, आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ मैन, आई एम अ बिजनेस वुमन, आई एम अ कोच, आई एम अ सोल। सोल आइडेंटिटी क्या होती है? मैं भगवान का अंश हूं और मुझे कहाँ जाना है? वापस ईश्वर के पास। फिर आता है कनेक्शन विद डिविनिटी। सो सोल हमें कनेक्शन विद डिविनिटी भी देती है। जितना कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग और प्योर होगा, द प्योरर योर कनेक्शन विद द डिवाइन एनर्जीज इन विच एवर फॉर्म यू बिलीव इन देम, कोई भी फॉर्म में बिलीव करो, उतना ज्यादा आप जो फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिलीफ है उससे दूर हट जाओगे। यू विल स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ बिलीफ, मतलब पूजा पाठ, व्रत, मंदिर जाना, कंपल्शन से करना, यू विल स्टॉप डूइंग इट। यू विल स्टार्ट seeing and feeling that the divine is within you, moving with you. So कभी आपको ये नहीं लगेगा भगवान कहाँ है। You will be living, breathing divinity every moment. You will not have to go to a temple necessarily. अभी अगर टेम्पल बाय कंडीशन जाते हो ना, बाय नेसेसिटी, तब बाय चॉइस जाओगे कि आज थैंक यू बोलने का मन कर रहा है। यू विल नॉट गो देयर टू क्राई एंड से प्लीज हेल्प मी। यू विल नॉट डू अ फास्ट टू से भगवान मैं 16 सोमवार करूंगी, अच्छा पति दिला दे। You will go and do and say thank you for my life, for everything in my life, and that will come as a choice, as a happy choice. This is what happens when you start connecting with the true essence of spirituality and the spirit within you, the soul within you. And then the last aspect is the emotional quotient. Emotional quotient क्या होता है? जो भी हमारे, so now understand one thing, thoughts are the father or the mother of emotions. बिना थॉट के इमोशन क्रिएट नहीं हो सकता। सो इमोशंस आर अ केमिकल कॉकटेल विच आर क्रिएटेड बाय योर थॉट्स। दिस इज हाउ फ्रॉम अ पीस ऑफ गॉड योर आइडेंटिटी बिकम्स बाउंड विद इन दीज पैरामीटर्स। इन 4 पैरामीटर्स में आइडेंटिटी बंध जाती है, सोच, शरीर, इमोशन और जो भी डिविनिटी को हम मानते हैं उस रूप में। Now what happens is, as a soul तो हम fit in हो नहीं पाए लाइफ में, सोसाइटी में, घर में, because when we wanted to be happy people said keep quiet, when we wanted to smile people said cry, when we wanted to talk people said don't act smart, चुपचाप बैठ जाओ। So what did we do? In that situation we created barriers between ourselves and the world. हमने मुखौटा पहन लिया, मास्क पहन, बहुत सारे, one mask on top of the other, one mask on top of the other. We started wearing them. So we became a good boy or a good girl. We became a सच्चा बच्चा. We became a hardworking child. We became a perfect people pleaser. वो इंसान जो सिर्फ लोगों के लिए करता है. We became a perfect rebel. जो भी बने, हम वो बन गए. और जैसे ही ये मास्क हमारे ऊपर आए, हमने एक और आइडेंटिटी क्रिएट करनी शुरू करी जो उल्टा हो गया। यहाँ आई एम अ पीस ऑफ गॉड था, यहाँ आके क्या हो गया? आई एम अ पीस ऑफ डॉग। गॉड का बिल्कुल उल्टा, आसमान से टपके खजूर पे नहीं अटके, सीधे धरती पे ही टपक गए। ऐसा हुआ हमारे साथ। और हमने क्रिएट करी ईगो, जिसका फुल फॉर्म कह सकते हो एजिंग गॉड आउट, भगवान को अपनी जिंदगी से बाहर धक्का देकर निकाल देना। बिकॉज जहां मैं है वहां ईश्वर नहीं होता। अब इन सब चीजों को रिजॉल्व करके वापस इस आई एम अ पीस ऑफ गॉड तक आने के लिए जो झाड़ू पोछा और लॉन्ड्री सर्विस की जरूरत होती है, वो होती है हमारे एनकैश के फर्स्ट पार्ट में। एंड द सेकेंड पार्ट ट्रेन्स यू टू बिकम अ ट्रेनर, इट ट्रेन्स यू टू बिकम अ लाइफ कोच, अ काउंसलर एंड एन एनर्जी हीलर और अ थेरेपिस्ट। नाउ फर्स्ट, यहां तक कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज मुझसे पूछिए एंड देन वी विल गो अहेड। Any questions? Anybody? Quick. No. So let's move ahead with the course curriculum of Encash. And I hope जो आज आप सुन रहे हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ, it is something different and it is adding value.
जो जितने लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, सबको बाहर करो. I can't see you guys. I don't know if you are there and if you're engaged. That is very important. I Yes, need ma'am. कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को. So Encash Your Wisdom जो एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की खास बात क्या है कि 6 महीने पहले आपको रगड़ेगा, 6 से 8 महीने. You have to do your laundry and we will launder you. Once laundry is done, then we move forward. So Encash Your Wisdom को स्टार्ट किस लिए किया गया? Encash Your Wisdom को शुरू किया गया इसलिए क्योंकि एक बेसिक नीड है. With the Ukraine-Russia war happening, with so much terrorism happening, with so much of highs and lows in systems happening. That's okay, Prajakta. There's no need to, if you can't open your cameras, it's okay. But मेरे को बताते रहो आप हो, so that मेरे को अगर आपको कहीं problem है तो मुझे पता रहे. So need of the hour, man. Why was it a need of the hour? Because everybody throughout, starting from COVID till now, has been suffering from different levels of depression, anxiety, stress, panic disorders. कुछ ना कुछ चल रहा है लाइफ में जो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर चल रहा है. See, we can't control people, we can't control the world. What can we control? Ourselves. But क्योंकि control नहीं हो पा रहा, so many people across the globe are struggling with suicide due to simply not being able to accept their life. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. यहाँ से आगे बढ़े तो देखा कि भाई जिंदगी में एक एवोल्यूशन की जरूरत है, एक ऐसे लेवल पर जिस लेवल पे हमसे कोई ये आके नहीं बोले कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो. हम अपने अंदर से पूछे क्या जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ. इन अ प्लेस ऑफ डिजिटल एक्सपोजर, डिजिटली इतना एक्सपोजर है, हमें ये भी नहीं पता कितना सच है कितना झूठ है. वी डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग. In such a situation, where do we go? How do we improve ourselves? How do we live and change, evolve with the current life? And the third main point was कि wellness एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर साइंस और स्पिरिचुअलिटी आकर मिलते हैं. So what it does for you is it connects your own self with the modern day aspects. और आपको एक ऐसे लेवल पर लाकर रखता है जहां पर जिंदगी आपके लिए एक बाउंड्री और एक लिमिटेशन नहीं बनती, बल्कि एक आसमान बनता है उड़ने के लिए. एंड ये मत सोचना कि मैं सिर्फ ये थियोरेटिकली बोल रही हूँ. आई हैव डन इट विद माय लाइफ, दैट इज व्हाई आई कैन पिच इट टू यू. मैंने अपनी जिंदगी में ये क्रिएट करा है, तभी मैं आज आपको बोल रही हूँ कि ये पॉसिबल है. फ्रॉम 0 rupees इन माई बैंक अकाउंट टू सम अमाउंट, I have no idea कितने हो, मेरे हस्बैंड के पास आजकल अकाउंट्स रहते हैं, but to a good saving, I have done it through this same method. Whatever has come into my use, I am going to give it to you. अगर आपको एक एनर्जी थेरेपिस्ट बनना है, so core के अंदर number 1, you need to trust your abilities and you have to have faith in them. तो जैसा कि हम क्वेश्चन करते हैं, क्या मैं कर सकती हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, इज इट पॉसिबल, ये सब डाउट निकाल दो. और नहीं निकलेगा, धीरे धीरे हम उसको डिलीट करते जाएंगे. वी विल वर्क ऑन इट स्टेप बाय स्टेप एंड रिमूव इट. जो भी आप सीखोगे, वट एवर यू लर्न नीड्स टू बी अप्लाइड रेगुलरली इन योर ओन लाइफ. इंग्लिश में बोलते हैं ना, वॉक द पाथ दैट यू टीच, और talk what you preach, walk what you preach. So आपको उस रास्ते पे प्रैक्टिकली चलना है जो आप लोगों को देंगे, सिखाएंगे. Then सोनिया जी, ट्रस्ट मी ऑन दिस. ये थॉट सेल्फ डाउट का मेरे पास भी था, इसकी वजह से मैंने 1 साल काम नहीं करा इस फील्ड में. डिस्पाइट हैविंग क्लाइंट्स, पीपल वुड कम अप, पीपल वुड से वी आर विलिंग टू पे यू व्हाटएवर यू वांट, हीलिंग कर दो, एंड आई वुड से नो, बिकॉज आई हैड नो फेथ ऑन माई सेल्फ. ये एक जंप होती है. और अभी मैं एक बड़ी अच्छी वीडियो दिखाऊंगी. आई सॉ दिस वीडियो yesterday and it was a mind blowing video. I will show it to you after 2 minutes. Just let me take you through a little background, फिर मैं दिखाती हूँ. अगर आपको एक अच्छा एनर्जी थेरेपिस्ट बनना है, you need a business plan and you need to launch yourself properly. एक कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. Why? Because आपके पास सेम फैमिली के बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग, mothers, daughters, husbands, wives, everybody will come together. एक की बात यहाँ नहीं जानी चाहिए, यहाँ की बात यहाँ नहीं जानी चाहिए. Suppose you are dealing with 4 people of the same friend circle,
दे शुड नॉट नो आप किससे बात कर रहे हो, कौन आपका क्लाइंट है. This is a very, very sacred profession and you need to be very mum. Fingers on your lips is the right attitude to use. You must keep on upgrading your skills and knowledge often and दूसरों की कहानियों में अपने आप को नहीं फंसा के बैठना है. How many of you do it? दूसरा रोने लगता है, आप उसके साथ रोते हो? How many Yes, of you ma'am. are the kind? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Good. और कौन yes, ma'am बोलेगा? 2 जनों ने हाँ करी है सिर्फ. This is very Yes, मैम हम ना अपने को उसमें ढूंढने लगते हैं, दूसरा बंदा कहानी बनाने लगता है, हम उसमें अपने को फिट करना शुरू कर देते हैं. बिल्कुल, हम ऐसा ही करते हैं, हम अपने आप को फिट करते हैं दूसरे की कहानी में. Yes. And all of a sudden हम बेचारी स्त्री या बेचारा मर्द बन जाते हैं उस कहानी का. मैं तो खुशी नहीं रह पाती, किसी को परेशान देखती हूँ ना, सोचती हूँ वो परेशान है तो मैं कैसे हैप्पी रह सकती हूँ. ये एक बिलीफ है, इस बिलीफ को डिलीट करो. You need to delete this belief. This is a belief that if the world is sad, how can I be happy? मैम सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बिल्ड होगा इस प्रोग्राम में, क्योंकि एक्चुअली मैंने भी काफी कुछ किया हुआ है, एंजल थेरेपिस्ट, प्राणिक हीलर, एंड बट आई एम नॉट गिविंग समटाइम्स की डर लगता है नहीं यार कोई ऐसे ही मजाक ना उड़ा दे, मतलब हम लोग को बहुत कुछ आता है बट कोई. Okay, I will tell you one thing. कौन पूछ रहा है ये क्वेश्चन? मैम मीनू जी, आई विल टेल यू वन थिंग. ये क्वेश्चन आप रूपाली जी, मीनू जी और तोशी आंटी को पूछिएगा, जिन्होंने फर्स्ट बैच में एनकैश किया था. अभी मैं उनकी शेयरिंग आप लोगों को बोलूंगी. तो ऐसे क्वेश्चन जो है कि इस वर्कशॉप की मेथोडोलॉजी, इफेक्टिवनेस, वो उनसे पूछिएगा, मुझसे नहीं. दे विल गिव यू अ बेटर, मोर बैलेंस्ड आंसर देन आई विल. ओके मैम. सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होना मैम, लगता है कि नहीं यार कोई हमें बेवकूफ समझेगा, कहेगा कुछ नहीं, और हम किसी को भी अगर अच्छा देते हैं तो मतलब उसका रिजल्ट आता है, बट नॉट फेथ इन आवरसेल्फ. See, because you don't have faith in yourself, the results are also in a way little less than what they should be. Faith in yourself is something जो lifetimes के suppression के बाद create होता है. So we will work on it. That is workable. मेरा बहुत बड़ा पैटर्न था, I am a failure. तो मैं कुछ भी काम करती थी, कुछ भी रिजल्ट आता था, मुझे अंदर से ही लगता था I am a failure. Before I would launch a product, I would know I'm a failure. And I have been into business since I was 17 years old with my parents. 17 साल से जब मैं 17 साल की थी तब से काम कर रही हूँ. ओके मैम. ठीक है, तो अभी इसका आंसर आपको देते हैं मीनू जी थोड़ी देर. ओके, थैंक यू मैम. थैंक यू. सो इसमें हम क्या क्या एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे? सेल्फ एप्लीकेशन, सेल्फ एक्सपीरियंस, ब्रिंगिंग थिंग्स इनटू योर डेली लाइफ. रोजाना आपको लाइफ में अपनी वेलनेस पे कैसे वर्क करना है. वॉकिंग द पाथ दैट यू प्रीच, जो हम दूसरों को सिखाएंगे, पहले अपने ऊपर आजमाएंगे. अपने ऊपर फेथ. मीनू जी देख लो, आपका आंसर आ गया. फेथ इन योरसेल्फ एंड ट्रस्टिंग द यूनिवर्स. तो अब हम भगवान को ये नहीं कहेंगे हे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया. अब हम भगवान को कहेंगे थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी. अगर हम देखें कि इसका स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है, सो एनर्जी थेरेपिस्ट, एनर्जी हीलर्स होते हैं, वर्कशॉप लीडर्स होते हैं, जैसे मेरे जैसा इंसान एक वर्कशॉप लीडर है कोर में, वेलनेस एजुकेटर है, वेलनेस कोचेस होते हैं जो लोगों के लिए सिस्टम्स बनाते हैं कि भाई अब आप ऐसे ये करो, अब मेडिटेशन करो, हफ्ते में इतने दिन ये करना है, पूरा सीक्वेंस क्रिएट होता है. वेलनेस स्पीकर्स होते हैं, रिलेशनशिप काउंसलर्स होते हैं, योगा एंड मेडिटेशन एक्सपर्ट्स होते हैं. जो लोग योगा करते हैं उसके साथ में मेडिटेशन और वेलनेस के और एस्पेक्ट्स कंबाइन कर सकते हैं. सो दिस इज वन इंडस्ट्री जिसमें बहुत लंबा स्कोप है ऑफ प्रोफेशनल वर्क. एंड कैश योर विजडम इज अ 2-tier प्रोग्राम. ये 2 tier का प्रोग्राम है जो कि 18 मॉड्यूल्स में बटा है. सो गाइस मैं 1 साल बोलती हूँ बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये 1.5 साल लगता है कम से कम कंप्लीट होने में. मैं अभी बता रही हूँ. इसमें क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस से डिफाइन नहीं होती है. जैसे आप चक्रा करोगे 5 क्लासेस, वैदिक स्विचवर्ड करोगे 5 क्लासेस, होली उपाय करोगे 1 क्लास. देयर इज नो नंबर ऑफ क्लासेस, देयर इज अ सेट कंटेंट. जब तक वो कंटेंट खत्म नहीं होगा और हर एक इंसान के दिमाग में नहीं घुसेगा, हम वर्कशॉप क्लोज नहीं करते हैं. और इसका आपको आंसर मिल जाएगा मेरे स्टूडेंट्स से. द फर्स्ट पार्ट वी एड्रेस योर सेल्फ हीलिंग. सेकेंड पार्ट इज द एडवांस्ड थेरेपिस्ट लेवल, जहां पे ट्रेनर्स को ट्रेनर लेवल पे आपको ट्रेन किया जाता है. अब हम कवर क्या क्या करेंगे. मैं बहुत बदनाम हूं बाय द वे सर्टिफिकेशंस रोकने के लिए और मेहनत कराने के लिए, तो प्लीज बी वेरी क्लियर अबाउट व्हाट यू आर गेटिंग इनटू. यू विल हैव टू वर्क.
This is not good time pass. मैम ऐसे ही बंदा चाहिए जो हमें कहे निकलो अब डंडा मार के, चलो भाई करो, ये तुम्हें करना ही है। साल भर के लिए एक चंडी आप लोग अपने पीछे लगा लोगे, ये समझ के चलना। चंडिका का रूप देखा ना दुर्गा माँ का, वैसा रूप चलेगा पीछे पीछे हर हफ्ते डंडा लेकर। मैम जब भी तो हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा ना, हाँ भाई नहीं तो ठीक है करना ही पड़ेगा अब। हाँ निशा जी, your hand, please say, please share. श्वेता मैम, चंडी देवी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और आप लिटरली चंडी देवी ही है। एंड डेफिनेटली, बट यू नो व्हाट, वो एक स्टार्टिंग का फियर होता है ना, जैसे कि डर जाते हैं हम कि अरे ये क्या हो गया, बट बाद में जब वो अच्छाइयां पता लगती है और जब हम अपने आप में वो चेंज देख के पता चलता है कि नहीं नहीं इन्होंने बहुत अच्छा किया है हमारे लिए, तो वो है ना लाइफ लॉन्ग ग्रैटिट्यूड रह जाता है, लाइफ लॉन्ग। But Nisha ji, I must say one thing. From the day you entered into Moksha Path till today, your journey has been phenomenal. The change in you has been phenomenal. That you can tell me, but definitely, you know, I was looking for something, and I know I'm on the right path. I have been telling you this, and that's why I'm here today. Shraddha ma'am, I have a question. Sometimes you don't have clarity about what is stopping you or what is wrong with you. Right now, I would say I'm in that position. I have been a trainer for L'Oreal. I have worked with them. I have handled a staff of 350 people, and my staff management was always 10 on 10. It's been 10, 11 years of break where I've stopped working completely. But today, if you will ask me, I don't even know, you know, what is stopping me. There are few things, yes, I know. You know, throat chakra hoga, suppression hoga, break hoga. So I want to know whether I'll get a clarity that what is stopping me here. So I will tell you one thing, Nisha ji. Number one, you will get a clarity. Number two, it is not the lack of clarity on what is stopping you. It is the lack of clarity on what is your purpose. What is the path you need to follow. मैंने जैसे बोला, I started working when I was 17. So from the age of 17 to 27, 28, I was working with my parents. मैंने अपनी पूरी youth जो होती है वहां दे दी. When I got married at the age of 28 to 2012 or 13 से लेकर के 2019 तक, I was into a trading system, like a B2B trade setup for wedding industry. And every day of my life, I have questioned myself, क्या मेरी जिंदगी यही है? मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रही हूँ? रास्ते क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्रेडिबिलिटी है तो क्लाइंट क्यों नहीं है? क्लाइंट है तो पैसा क्यों नहीं है? पैसा है तो पैसा स्टे क्यों नहीं करता? जिस दिन से I have come into this line, my path has automatically been created, and trust me, this was not my choice. This field, this industry was not my choice. I went into this training only to save my marriage and save my own sanity. अपने पागलपन को दूर करने गई थी कि या तो सुसाइड कमिट कर लूंगी या घर छोड़ के भाग जाऊंगी. उसको अपने आप को बचाने के लिए मैं इस ट्रेनिंग के लिए गई थी. So the day you find your path, that one thing that is meant for you ना, उस टाइम पर ये सब चीजें आपकी लाइफ से क्लियर हो जाएंगी अपने आप, और वहां तक पहुंचने में ये वर्क कोर्स आपकी हेल्प कर सकता है. Okay, because I think even I am here for the same. मैंने आपको मोक्ष पाथ के टाइम पे भी कहा था, you know, मैं अपने आप समझने की कोशिश कर रही हूँ कि what exactly has to be done. So this works, right? This will help. Okay. See, this will help you in many spheres, not just in finding your path, in clearing all your blocks, in clearing your limitations, your own set of beliefs. Then सबसे बड़ी चीज है, ये आपको इतना intuitive बना देगा that you will become a walking, talking lie detector. This is not such a good space to be. जब पति झूठ बोलते हैं तो पकड़े जाते हैं 1 सेकंड में. But nonetheless, मतलब मेरे केस में तो मैं पति को ही पकड़ सकती हूँ ना, किसको पकड़ूंगी, और मेरा बेटा झूठ नहीं बोलता अभी इतना, तो it is like you become a walking talking lie detector. More than that, you are so connected with your own self कि अगर आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है ना जो बोलने से कुछ गड़बड़ होगी, तो before you speak, इधर पता है मैं बोलने जा रही हूँ. So you have that time limit or that command over yourself to stop. And ego, सबसे बड़ी चीज, the said that ego, why should I apologize? Why should I say sorry? I am not wrong. वो ना कम होने लगता है to an extent जहां पर अगर आप गलत हो ना
तो बिना बेझिझक आप माफी मांग सकते हो. Okay. You will take a stand when you want to say I am not wrong, but when you are wrong, you will simply say it's okay, I was wrong, I'm sorry. There's no ego there. But for this, you have to work. ऐसा नहीं है कि क्लास में आए, क्लास का ज्ञान दिया और चले गए और फिर कुछ नहीं किया. You have to give yourself at least 15-20 minutes to 1 hour a day at the later stages. शुरू में 15-20 मिनट बहुत है, every day. But later stages में, as you will learn more, you will need to give yourself a little more time. Because ये 1-1.5 साल का period is one period where I am there with you with a danda. So whatever you can create and pull in, please pull in. After this, what will happen is I will be there, but I will be there in a limited access. Right. ये 1.5 years का period जो होता है ना, this is like infinite access. Ask any of them. एक मैसेज जाता है, कितनी बार क्लास रोक रोक के फोन करती हूँ मैं अगर कोई अर्जेंट या इमरजेंसी मुझे लगती है. वॉइस नोट्स के थ्रू पूरा दिन कॉन्वर्सेशन चलता है. No, it will not be every day, Sonia ji. Just give me 2 minutes. I'll come back to the content. Nisha ji, let me just go through the PPT first, then we'll come back to questions. Okay? Sure. Thank you. So, इस course के अंदर level 1, what will we be covering? We will cover the foundation of energy work. So, energy किस basis पे work करती है? How can it be transmuted? Who, understanding my own self. जो अभी आपने 4 slides देखी, वो who am I का बहुत छोटा सा part है. It is more elaborate than that. Understanding levels of consciousness, understanding many different things that create your reality. Then quantum physics के वो tenets, वो theories which need to be understood because they apply to everyday basis of our life. The 7 hermetic principles which are immutable laws. Unfortunately क्या है, ये laws 2 हमारे यजुर्वेद में हैं. यजुर्वेद में होने के बाद भी they are very in a language and in a form which is not easily understandable. जैसे यजुर्वेद में एक hermetic principle था, as above so below, as within so without, the principle of correspondence. यजुर्वेद में था यथा पिंड तथा ब्रह्मांड. So ऐसा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट्स हमारे वेदों में नहीं है, ये यजुर्वेद में है. सारे 7 hermetic principles हैं. The only thing is ये एक जगह नहीं है, ये पूरी बुक में फैले हैं. तो मुझे सारे अभी तक वेदों में नहीं मिले हैं, तो हम इसको कवर करेंगे from the hermetic principles. Hermetic principles is basically a concept of Egyptian religion and Egyptian spirituality. फिर Ho'oponopono, EFT, inner child healing, shadow therapy, chakra therapy. ये 5 methodologies. Please mute पे रहिए. आप कौन unmute कर रहा है अपने आप को? कुंदन जी, please stay on mute. Thank you. So Ho'oponopono हमें soul level पे healing देते हैं. EFT, inner child healing, will help you with EFT will help you with physical, emotional and mental healing. Inner child healing and shadow therapy, mind and emotions, patterns, और जो भी चीजें हमें रोज में रोक रही हैं, हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उन सब पे. चक्रा थेरेपी ऑफ कोर्स ऑन द एनर्जी सेंटर्स ऑफ आवर बॉडी, क्योंकि अगर हमारी एनर्जी रेगुलेट नहीं होगी तो उस एनर्जी के होने का कोई फायदा नहीं है. 1 minute, I will put everybody on mute because I don't know why लोग unmute कर रहे हैं unnecessarily. अभी मैं mute पे डालूंगी. Then the laws of the universe. So principles of the universe and laws of the universe दो अलग-अलग चीजें हैं. Principles are those laws which cannot be broken. सृष्टि भी उन्हीं नियमों से बंधी है. और laws of the universe वो laws हैं जो कभी-कभी change भी हो सकते हैं. For example, karma is a principle. It is not a law. उसे बोला जाता है law of attraction, but it is actually a principle of the universe. It is not a law. इनके अलावा हम और भी बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, like pelmanism, color brain therapy and many things which are not mentioned here. ये मेरा अपना कॉकटेल होता है, जो जैसे नीड होती है मैं देती जाती हूँ. Then second part of the second level of the program is the trainer module. तो जो हमने level 1 में किया उसका trainer level plus कैसे हम ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, ईस्ट एंड वेस्ट को ईस्टर्न कॉन्सेप्ट्स को वेस्टर्न मेथोडोलॉजी से पुट इन करेंगे, कंबाइन करेंगे, यूज करेंगे. देन प्लानिंग ऑफ हीलिंग सेशंस एंड काउंसलिंग सेशन.
सपोज करो एक आदमी आता है, कोई क्लाइंट आता है, उसको 25 सेशन देने हैं, 10 सेशन देने हैं. हाउ विल यू प्लान इट आउट? सेशन 1 में क्या होना चाहिए, सेशन 2 में क्या होना चाहिए, कैसे उसको आप पूरा प्लान करोगे? देन we all know many modalities, like Meenu ji said, somebody said, I know so many things. हम उसे यूज नहीं कर पाते. उन चीजों को इकट्ठे तोड़ मोड़ के जोड़ना कैसे है into one method which is yours, जो आपके लिए यूनिक है. एंटिटी क्लियरिंग. एंटिटी क्लियरिंग मतलब जैसे हम कहते हैं कि कोई नेगेटिव एनर्जी फंसी हुई है, वो हट नहीं रही, तो घर में लोग नहीं रह पा रहे हैं. कोई साइट है, कंस्ट्रक्शन साइट है, जहां पर कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हो पा रही है, वहां से एनर्जीज को कैसे क्लियर करना. स्पेस क्लियरिंग, जगहों को, घरों को क्लियर करना. सरोगेट थेरेपी. सरोगेट थेरेपी क्या होती है? जब आप किसी दूसरे फिजिकल चीज के अंदर या अपनी फिजिकल बॉडी में अपने क्लाइंट की एनर्जी पुल करके हील करते हैं. सो आई विल नॉट टीच यू सरोगेट हीलिंग बाय पुलिंग एनर्जी इन योर बॉडी लाइक आई लर्नड इट. हम इसको दूसरे फॉर्म में करेंगे जिसमें आपको कोई नुकसान ना हो. एंड डिस्टेंस हीलिंग. दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप किसी को भी हील कर सकते हैं विद एनी, फॉर एनी इश्यू एंड एनी प्रॉब्लम. कंडक्शन ऑफ क्लास क्या है इसका? देयर आर 2 क्लासेस, लाइव क्लासेस ऑन Zoom एवरी वीक. इस बैच में इट इज वेडनेसडे एंड थर्सडे, मॉर्निंग 9 AM to 12 PM. हर महीने आप मुझसे 2 पर्सनल काउंसलिंग सेशंस 1-on-1s ले सकते हैं एट एनी गिवन टाइम थ्रू अपॉइंटमेंट. सिर्फ कॉल मत कर देना, जरूरी नहीं है उस टाइम में फ्री हूँ. व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा आपके बैच के लिए. देन अगेन ऑफ कोर्स एल्यूमनाई ग्रुप रहेगा. रिटन नोट्स कम मिलेंगे, समझना ज्यादा है. आई विल गिव रिटन नोट्स, दो इट इज सेइंग नो रिटन नोट्स टू बी प्रोवाइडेड. बाय द टाइम हुआ क्या, मैंने बहुत सारे मॉड्यूल्स बना लिए हैं, सो आई विल शेयर इट इन राइटिंग. सिंस आई हैव देम, दे आर योर्स. गीतू खुश हो जाओ, नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे इतने सारे. सो अगर आप रेडी हो टू बिकम अ लाइफ कोच, एनर्जी थेरेपिस्ट, relationship counselor, distance healer, surrogate healer, space clearing coach, meditation leader, spiritual counselor, wellness coach, then this program is for you. Otherwise it is not for you. चाहे आज आपको इसे यूज नहीं करना है प्रोफेशनली, that is okay, that is fine. Now let's move to the logistics, and then I will show you one video. I think that video is one thing which will create something very different for you, because कल उसने मुझे एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू दिया, तो आपकी लाइफ में भी शायद वो ब्रेक थ्रू मिले. Now you have a choice, guys. You have a choice, one single choice, कि या तो जाओ YouTube, जाओ घूमो, ऐसे कोचेस, छोटे प्रोग्राम्स करो जहां पर मीनू जी टाइमिंग्स कैन नॉट बी चेंज. इट्स अ रनिंग बैच. आई हैव US क्लाइंट्स, इसमें US के स्टूडेंट्स हैं मेरे. टाइम तो चेंज नहीं होगा, 9 to 12 रहेगा, बट रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी. सो इफ यू मिस अ सेशन और अ पार्ट ऑफ द सेशन, यू कैन टैप इन. आप खुद रिसर्च करो, खुद सीखो, दैट इज योर चॉइस. या सेकेंड चॉइस है, आप मेरे साथ वर्क करो एंड लेट मी हैंड होल्ड यू टू क्रिएट समथिंग विच इज फॉर यू, नॉट समथिंग विच इज जेनेरिक. बिकॉज जब यूट्यूब पे स्नैकिंग करके वीडियोस देख के फॉलो करोगे, तो एक क्वेश्चन आएगा, ये वर्क क्यों नहीं कर रहा? Where am I going wrong? There will be nobody to answer. But here you have 100% hand-holding till the program is running. The fee of this entire program is 2,40,000. Actually, 3,20,000 रुपए है plus GST. But right now, it is going to be for 2,40,000 for those people who register. इसमें आपको जो सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, लाइफ कोच, एनर्जी थेरेपिस्ट, स्पेस क्लियरिंग कोच, वर्कशॉप लीडर एंड ट्रेनर. मैंने 2 सर्टिफिकेट बढ़ाए हैं इस साल, स्पेस क्लियरिंग कोच एंड लाइफ कोच. पहले इस प्रोग्राम में ये 2 सर्टिफिकेट्स नहीं थे, इस साल ये बढ़े हैं. एंड दिस फी कैन बी पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स. अगर मंथली इंस्टॉलमेंट करते हैं तो 20,000 रुपीज पर मंथ इज द ओनली एक्सपेंडिचर दैट यू नीड टू गिव. सो इन्वेस्ट करना क्या है? 1.5 से 2 घंटा रोज का, 3 घंटा 2 दिन, 20,000 रुपीज अ मंथ, एंड अपने आप की लाइफ के लिए, अपनी जिंदगी के लिए एक सॉलिड कमिटमेंट. दैट्स इट. एंड लेट मी जस्ट, एक चीज ये है, सर्टिफिकेट्स तो मैंने आपको चारों बता दिए, लाइफ कोच, एनर्जी थेरेपिस्ट, स्पेस क्लियरिंग कोच एंड वर्कशॉप लीडर एंड ट्रेनर. नाउ बिफोर आई टेक योर क्वेश्चंस, इसे डाइजेस्ट करो, एंड आई वांट टू शो यू ऑल अ वीडियो.
ये वीडियो मेरे लिए बहुत रिमार्केबल थी. कल रात को मुझे किसी ने दिखाई, एंड सच बोलती हूँ दिमाग के खिड़कियां दरवाजे सब खुल गए. So I hope this will bring in some information, some change to your life as well. 1 second. Can everybody see my screen? सबको मेरा screen दिख रहा है? Successful person in this world has jumped. I'm going to tell you what I mean by that. You are going to have to jump. You cannot just exist in this life. You have got to try to live. If you are waking up thinking that it's got समझ रहे हो, सुन रहे हो वो क्या कह रहा है कि हर जना, हर सक्सेसफुल आदमी ने जिंदगी में कभी ना कभी एक छलांग लगाई है. Every successful man has jumped. If your idea of living should not be survival, it has to be thriving, living a life. और अगर रोज सुबह उठते हो और ये सोचते हो ना क्या यही मेरी जिंदगी है, so then you are not thriving, you are surviving. Got to be more to your life than it is. Man, believe that it is. But to get to that life, you're going to have to jump. Now, I'll tell you why I call it jumping. See, God, when he created all of us, he gave every last one of us a gift at birth. He never created a soul without endowing them with a gift. You just got to quit looking at gifts. When God gave us birth, he did not create a soul without giving us a gift. It says run and jump and sing and dance. It's more than that. It's if you know how to network, if you can connect dots, if you draw, if you teach. Some of y'all fry chicken better than anybody else, bake pie. Some of you cut hair, color hair. Some people do grass. I got a partner, man, never wanted to go out with us because we stayed out too late. Come on, man, go out with now. I got to get up early, mom, cutting Miss Johnson grass. We kept laughing at this dude, cutting grass. How much they pay you? He got a landscaping company in Cleveland worth $4 million. Because all he do is cut grass. See, this person cuts grass for $1 million every month. This is his gift. But he was gifted at it. I got a partner on a detail shop, make $800,000 a year detailing cars. He got 6 mobile trucks running around. $800,000 a year. All he do is detail cars. That's his gift. That's what he loved to do. You've got to identify that gift. Now listen to me. When you see people in life, when you're standing on the cliff of life and you see people soaring by, तो क्या कहता है हमें अपने गिफ्ट को आइडेंटिफाई करना है. और जब हम एक ऊंची जगह पे खड़े होके लोगों को देख रहे हैं ना, उड़ान भरते हुए, जिंदगी में एंजॉय करते हुए, जिंदगी को लिव करते हुए. You hear about them doing wonderful things. Maybe you look up the street and your neighbor just gets a car every year, every 2 years. You know, how is he doing that? Have you ever thought? तब हम ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों है कि उसके पास सब कुछ है and my life is not working out. Why is it that my people are going out for 4 holidays a year and I can't take one? Why does somebody have 2 cars and I am still walking or on a cycle? At that point of time, know that they have used their gifts. They have identified and are using their gifts. Maybe this person right here has identified their gift and is living in their gift. Because your Bible says, your Bible says your gift will make room for you. Your gift, not your education. You go get an education, that's nice. Your gift will make things for you. Not your education, not your life. It is your gift. But if you don't use your gift, that education only gonna take you so far. I know a lot of people got degrees, man. They ain't even using it. It's your gift. But the only way for you to soar is you got to jump. You got to take that gift that's packed away on your back. You got to jump off that cliff and pull that cord. That gift opens up and provides the soul. If you don't ever use it, you're going to just go to work. And if you're getting up going to work on a job every day that you hate going to, that ain't living, man. You just existed. At one point in time, you ought to see what living's like.
But the only way to see what living like, you gotta jump. And here the problem. I'm gonna just be real with you. When you first jump, let me tell you something. Your parachute will not open right away. You're gonna hit them rocks. You're gonna get some skin tore off on them cliffs. You're gonna get all your clothes tore off. You're gonna get some cuts on you. You're gonna be bleeding pretty bad. But eventually, the parachute has to open. That is a promise of God. That ain't a theory, that's a promise. His promises is true, because listen to me. You cannot name one single thing God has not gotten you through. Name it. सुना, अगर एक बार में जंप करे और चोट लग गई, सक्सेसफुल नहीं हुए, फेल हुए, that doesn't mean that you will not be successful in your life. Because have fun faith. You will get through. और अपने ऊपर faith नहीं रखना है, किसके ऊपर रखना है? Divine, Creator, God. Because in your life, no matter what has come, He has gotten you through it. उसने आपको धक्का मारकर, खींच तान कर यहाँ तक पहुंचाया है. So if you have no faith on yourself, have faith on Him. And if He ain't got you through it, He currently pulling you through it right now. And the living proof of it is you sitting in here. If He hadn't got you through it, you wouldn't even be here. So if He ain't... अगर आपको ये लगता है कि you are still going through a troubled time, so He's still pulling you out. क्योंकि अगर उसने आपको नहीं खींचा होता, नहीं धक्का मारा होता, तो आप यहाँ नहीं होते. I hope this video is making an impact in your life, because इस वीडियो ने मुझे कल बहुत बड़ा लेसन दिया अपनी लाइफ का. Never not got you through it. Why would He not let your parachute open? It has to open, man. You can play it safe and deal without the cuts and the tears. And you can stand on that cliff of life forever safe. But if you don't... He says, you have two choices. या तो jump करोगे, चोट खाओगे, सीखोगे और ऊपर जाओगे. या फिर keep safe, stay aside, मत कूदो, मत jump करो, मत छलांग लगाओ. चोट नहीं लगेगी. लेकिन तब क्या होगा? दूसरों को देखोगे अपनी जिंदगी जीते हुए. Don't jump. I got another promise I can make you. Your parachute will never open. You'll never know. You'll never know what God really has for you. See, your God has a wonderful life for you. Once again, I'm going to refer to your Bible. Now, you go down there, you memorize these scriptures, you don't apply them to yourself. Your Bible says that He comes to give you life and give you life more abundantly. If I were you, I would jump, because that's the only way to get to that abundant life. You got to jump, man. You got to take a chance. Now, when I get through talking, there are those of you who discuss this in the car. Well, I got bills, and I got bills. Whether you stay on the cliff or you jump, you're going to have bills. Well, if I quit my job, I'm going to ruin my credit. If you got a job, you live in check to check. Even if you got A1 credit, you can't buy nothing else no damn way. At one point in time, man, do yourself a favor. Go see what God really do. God hold you up, man. He ain't gonna let you fall. He ain't bring you this far and let you fall. Do yourself a favor, man. Before you leave this world, before you die, jump. Just jump one time. Just jump. Thank you very much. कैसा लगा? क्या समझ में आया? अब मैं अनम्यूट कर देती हूँ. So guys, this brings me to the end of my presentation for all of you. This is Encash Your Wisdom. Now, before we move forward, I would ask Rupali ji and all to share their, Rupali ji, Meenu ji, Toshi aunty, Geetu, Ketki, Rashmi, to share their experiences. And उसके बाद में I'll take any questions if there are there. अगर किसी को question है methodology, what will you create? Ask them. Rupali ji, Meenu ji, and Toshi aunty have been in batch 1. Rashmi, Geetu, Ketki, they are in the second batch. Drugveda and Kashika are not here. So they will be able to tell you better आपको क्या मिलेगा और क्या नहीं. After this call, I am not going to tell you join the program. If you want to live your life, then jump. If you don't want to,
That's your choice. Logistics can be worked out, and I'll tell you why. मेरी mentor ने मुझ पे एक बहुत बड़ा एहसान किया था और एक बहुत बड़ी सीख दी थी. She taught me once, and she told me, she said, Sweta, जब पैसे होंगे तब दे देना, EMI बांध ले, monthly installment. And there were times when I had no money to pay, and I would message her, इस month का नहीं दे पाऊंगी. She said, okay, doesn't matter. She taught me one thing: giving was more important. So payment तो मैं आपसे पूरी लूंगी, लेकिन आपकी अपनी installment setting के हिसाब से. Once all the girls, my girls ही है मेरे लिए. I'm sorry, but मेरी ना अब आदत हो गई सबको बेटा 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 बोल के बेटा बोलने की. तो मैं 40 से भी 70 तक के लोगों को भी कभी कभी बेटा बोल देती हूँ. For that, apologies in advance. So when my girls will speak out their experience, you can question them, and once they leave, I'll take your questions. इसके बाद में Pallavi will be connecting with you. Don't say सोचूंगी करूंगी. If you want to do it, tell her I am into it. Discuss your problem with her from the perspective of what is stopping you. She will guide you towards me, towards my alumni, towards the accounts department, wherever you need support. If you don't want to do it, please honestly say yes. Take responsibility for your choice. And remember, जिंदगी में options बहुत आते हैं. So opportunities को सही तरह से तराश के use करना is your job. Now let me quickly put my girls on spotlight so that they can talk to you, and they will answer your questions about the basic program working, not me. रश्मि अपना कैमरा ठीक करो. ऊपर ऊपर दिख रहा है मुझे. अब ठीक हो गया. गीतू वेरा यू एक बार हैंड रेस करोगे प्लीज. अरे मैं यहाँ हूँ. मेरा नहीं आया. वो कहीं वही नहीं जा सकती है. Neetu is always in limelight. So one by one, guys, please share and quickly. Yes, Toshi auntie, we'll start with you. Senior most से start करते हैं. Pali ji, are you there? Actually, I need to leave. Yes, ma'am. Okay, आ जाओ फिर. पहले आप share कर लो. You're asking Rashmi or me? No, Toshi auntie. Okay, hello everybody. I am Toshi Agarrwal, one of the pioneer students of Encash Your Wisdom. You know, as I said in my testimonial, I just joined it out of curiosity. It just happened to me. And when I joined it, I will... Toshi auntie, unmute yourself, please. Unmute karo. Okay, fine now. हाँ, अब ठीक है. I am Toshi Agarrwal, one of the pioneer students of Encash Your Wisdom. I joined this program just out of sheer curiosity. I did not know what I was getting into. I just wanted the answers to a few of my questions. Who am I? What am I? And what is my life purpose? I've been there, done that, lived my life for 67 years. So I had nothing to lose, just gain and have a little fun with spirituality. You know, so Encash, guys, is something which encompasses energy healing modalities. These are alternative healing practices. They make us, balance our lives. Okay. Now, it has brought about a lot of astounding, phenomenal changes in my life. I have healed my money blocks. I have healed my relationships with my partner, with my siblings, with my in-laws, friends, extended families. These issues, I did not even know they existed. The more Sweta made us learn about it, dig deeper into our emotional well-being, many more issues came up. See, I have healed my health issues as well. And I have stopped blaming people. I've started taking responsibility for all that is happening in my life. Earlier it was, मेरे साथ ये बुरा हुआ है तो you are responsible. No, now the responsibility is mine. And इससे क्या होना शुरू हुआ that I became a creator. It empowered me so much because I took responsibility for everything in my life. Earlier I was a people pleaser,
सबको खुश रखना। एक मीनू जी ने क्वेश्चन पूछा था, विल आई गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस? आर यू देयर मीनू जी? आई थिंक इट वाज समबडी मीनू जी। Yeah, there is Are you was listening? another Meenu. Meenu Jain थी शायद, मीनू एम लिखा हुआ यस था। यस 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 हाँ मैम। मीनू जी, यू नो सेल्फ कॉन्फिडेंस, अभी वीडियो भी आपने देखा ना? You यस have मैम। to recognize your own gift. All of us are gifted with a gift. मेरे को अपने गिफ्ट के बारे में नहीं पता था. श्वेता made me aware of them through this program, and I learned to use those gifts. Okay, they were lying latent, hidden within me. So more you use, the more you hone your skills. जो आपके strong points हैं, they'll make you more confident, won't they? आपको डिस्कवर करनी है कि मेरे गिफ्ट क्या हैं, सिंस ऑल ऑफ अस आर बॉर्न विद दोस गिफ्ट्स। वी आर अ पीस ऑफ गॉड, परमात्मा का एक अंश है। तो जो परमात्मा के अंदर क्वालिटीज है वो सब हमारे अंदर हैं। ओके, हमें वो ढूंढने की देरी है, उनको एक्नॉलेज करनी है, उनको ऑनर करना है। सो यू विल ऑटोमेटिकली बिकम कॉन्फिडेंट। ओके, yes ma'am। so another point, I have stopped reacting. Situations बहुत सारी आती हैं जिंदगी में, रोज आती हैं, पल पल आती हैं। एक तो I have become aware कि वो situation आ रही है मेरे सामने। Now I make a choice whether I want to be affected by it or just let it pass and not make that emotion mine. You know, if somebody is saying I'm fat, okay, that is the other person's perspective. I need not make it my own. Okay, इससे एक ठहराव आ गया जिंदगी में। I am calmer. I love myself. I hope that's enough to make you people join in cash, because एक साल कहाँ चला गया I don't know. I have learned so much, so much. I'm a self-healer, a practitioner now. I don't need to ask for any, advice from people. I have it in my hands. I have it all here, how to heal myself. And I hope you all enjoy the journey who all agree to join in this journey. It is going to be a beautiful one. And no doubt श्वेता एक चंडी का रूप, रुद्र का रूप लेके खड़ी हो जाती है। हमने बहुत डांट खाई है just to be able to reach this point of time. और मेरे को बिल्कुल नहीं पता था कि ये क्या सिखाएगी, क्या बोलेगी, क्या करेगी। और जब I would listen to her webinars, रात को नींद नहीं आती थी, एयरपोर्ट लगा के पता नहीं चलता था कब हम सो जाते थे। More like a satsang or whatever. And the more I listen to her webinars repeatedly, the more I gain. Okay, guys. So all the best to all of you. One question I want to ask you. So you all have paid the same fee. So yes, is this fee an honest fee that I'm charging? I just repeat your question. So is this so fees? what I'm saying is 2,40,000 रुपए लोगों को ज्यादा लगेंगे, obvious सी बात है। So क्या ये valid fee है इस प्रोग्राम के लिए? See guys, it is मैं बताती हूँ, when I joined मेरे को भी लगा था कि I had never done these modalities और ये मैं क्यों दे रही हूँ, it's something you can't hold, you just have to feel it. हवा हम देख नहीं सकते, we can just feel it. Thoughts we can't see, we can feel them, emotions, everything. तो मेरे को भी लगा था बहुत महंगा है, what am I getting into? But believe me, it is more than the money you will be shelling out for this program. एक तो श्वेता delivers more than she promises. और क्या आप लोग खरा सोना निखर के आओगे ना, even you people don't know. Even श्वेता doesn't know कि वो क्या सिखाएगी, क्या नहीं सिखाएगी. Okay, and the fees is definitely not there. मेरे mind में भी आया था, but no, not at all. पाई पैसा नहीं doubt है कि, I mean, she's worth more than what she's charging this program for. आपके मुंह में घी शक्कर आंटी, 2 साल रुक जाओ। नहीं, as you अब बढ़ते हो ना आगे इस प्रोग्राम में, तो you realize कि सारी जिंदगी करा क्या है, एक तो अपने आप से मुलाकात हुई, but God, I'm such a beautiful human being यार। दूसरों ने क्या मेरे को बना दिया है, I thought that कि दूसरों ने बनाया, नहीं, वो मैंने खुद बनाया था in my ignorance. So
It was 100% my responsibility and 0% there. But in this program, there's so much hand holding, so much. I mean, what do I say? Hand holding, spoon feeding also. But काम आपको करना पड़ेगा अपने ऊपर. Thank you so much, Toshi aunty. Anybody would like to ask Toshi aunty question? Because देखो Toshi aunty को जाना गीतू के लिए बहुत लेट हो रहा है. So इसके बाद गीतू का शेयरिंग होगी. इन दोनों जनों से कुछ पूछना है तो आप. श्वेता सॉरी मेरे को अभी जाना पड़ेगा क्योंकि डॉक्टर आए हैं तो आई विल हैव टू जस्ट मूव. आप शेयर कर, आप जाओ. If you want to share, I will. Yeah, I want to do my sharing. हाँ प्लीज कर दो. I am in the batch. कैमरा नीचे करो, कैमरा नीचे करो. अब ठीक. I am Rashmi Periwal in this batch of Encash. I promise you won't regret because I have also done I have not done many courses with her. I have done 2 to 3 courses with her. But yeah, I promise ये जितना बोलती है उससे ज़्यादा देती है. That is the trust. And it is really an amazing thing because the way she tells and the way she brings up, उसमें ही इतना अच्छा satisfaction मिलता है कि आप कोर्स करोगे उसके बाद तो लगता है चांद पे जाएंगे हम. And yeah, it is there कि we grow together. So I have made it my motto of my life. We will grow together. Thank you. Thank you, Rashmi. You can go, Rashmi. Yeah, thank you. गीतू आप शेयरिंग कर दो, फिर मैं तोशी आंटी और आपके लिए क्वेश्चन ले लेती हूँ. देन केतकी एंड मीनू जी एंड रूपाली जी कैन शेयर बिकॉज आई नो यूएस में 2-2:30 बज रहा होगा कम से कम अभी. नहीं 11:30 हुआ है. तो फिर तो आधा घंटा और रुक जा. बट शेयरिंग दे दो. मैं अभी दूं कि मैंने अभी रुकूं? जब जैसे मन हो. क्वेश्चंस फिर बाद में ले लूंगी ना मैं तुम्हारे. Okay. So hello again. My name is Geeta Soni and I joined Sweta through Mokshpat only. जैसे आप लोगों ने सबने ज्वाइन करा होगा किसी ना किसी क्लास के थ्रू, होपोनोपोनो के थ्रू, मैंने भी थ्रू उसके थ्रू किया है Mokshpat, and I think it's been 2 years now. And yeah, मेरा जर्नी श्वेता के साथ बहुत अच्छा रहा है एंड आई एंजॉयड. बट ये पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी तो लेकिन हो सकता है अब थोड़ा सा कामनेस आ गया हो. नहीं तो मेरे को भी पता नहीं. मुझे डंडा निकालना पड़े. आई नो वो अभी स्टेज आया नहीं है तो बाकी she's been there for me as well जब मेरे को बहुत ज्यादा I was down and she मतलब जैसे कहते हैं ना कि गुरु हाथ पकड़ के चलता है. जब बहुत डिफिकल्ट स्टेज था मेरे लिए, मेरे फादर इन लॉ he was not there and he had Alzheimer's and different stages में जा रहे थे and I used to cry a lot. And then when he passed away, तब भी मेरे को श्वेता ने काफी हैंड होल्डिंग किया था कि ये करो, ये नहीं करो, अपने आप को संभालो. एंड अब जो है एनकैश का अगर मैं ये कहूँ कि भी मैं भी पहले बैच में नहीं कर पाई थी बिकॉज आई हैड मनी इश्यूज. बट सेकेंड बैच में मी एंड रश्मि गेव हर द परमिशन कि भी श्वेता प्लीज आप जब भी इनकैश का शुरू करोगे वी आर देयर. नो मैटर कोई आएगा नहीं आएगा, रश्मि और मैं दोनों हैं. And before coming to USA, I cleared all my ये Encash का पूरा पैसा देके आई थी कि भी ये मेरा तो है पूरा 1 साल का, और अगर आपको और भी चाहिए तो प्लीज टेल मी, मैं अपना क्लियर करूंगी. तो आई नो कि मेरे को केतकी ने डाउट्स पूछा था कि भी उसको डाउट है, तो आई क्लियर्ड हर एज वेल एंड देन शी इज आल्सो देयर with us in Encash. And if you have any of you have doubts कि Encash का करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो you can also ask me. मेरा लेकिन टाइमिंग यही है कि मैं USA में हूँ तो आपके 13.5 घंटे का डिफरेंस है. तो जैसे आपके वहां पे अगर मॉर्निंग है तो मेरे यहाँ रात है 11:30.
my daughter is going to sleep. तो यहाँ पे बस मेरा वही फर्क है, अदरवाइज आई एम देयर. इवन अभी भी अगर जो मैं ये कहती हूँ कि भी इनकैश के जो ये 2 months हमने निकाले हैं, तो उसमें भी जैसे क्या मेरे में नेगेटिव पॉइंट है, किस चीज में मुझे हीलिंग देना है, क्या 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 माइनस पॉइंट्स है मेरे को, जिसको आई नीड, मेरे को वो दिखाती है आईना, गीतू यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, सो दिस इज यू एंड हाउ यू नीड टू इम्प्रूव योर सेल्फ. Yeah, so this is my student थीटा बैच 3 की. So श्वेता के साथ मैंने थीटा सीखा था, and after थीटा I have done 3 classes. तो थीटा में से एक बैच में से नीता मैम आई थी, एंड दूसरे बैच थर्ड बैच में से शुभा है, थर्ड बैच में से. So I have learned a lot. और जो कॉन्फिडेंस ये देती है ना, मीन्स आप मेरे में बहुत सेल्फ लो कॉन्फिडेंस था, बिल्कुल भी बोल नहीं सकती थी, लेकिन श्वेता से इतना मोटिवेट हुई हूँ कि आई हैव स्टार्टेड माय ओन क्लासेस नाउ. सो थैंक्स टू श्वेता, लव यू. लव यू टू. एंड एक श्वेता, आप ये ध्यान रखना कि आप ना बहुत सारी इनकैश की क्लासेस करोगे एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे आपके, क्योंकि आपको ना बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी देनी है. आई एम ऑलवेज देयर. थैंक यू. थैंक यू. यस, केतकी, क्विकली अनम्यूट. Hello everyone, my name is Ketki Papad. I know Swetta ma'am since March 2022, or now almost a year. मैंने भी इनकैश का एक ओरिएंटेशन अटेंड किया था एंड आई वाज टोटली सोल्ड टू इट, बट एक डाउट था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं. तभी मैंने मीनू जी को कॉल किया था, गीतू जी को कॉल किया था कि क्या होता है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं ऐसे. तो उन दोनों ने मुझे बहुत क्लैरिटी दी थी. एंड मुझे एक था कि मुझे मेरा लाइफ चेंज करना है, और मतलब मैं एनर्जी फील्ड में काफी 2016 से हूँ, लेकिन इतना रिगरसली मैंने कभी नहीं किया था. मैंने सिर्फ रेकी सीखा था, लेकिन ये सब के मतलब मुझे सब कुछ अच्छा लगता था. लेकिन जब भी मैम का मैंने इनकैश का ओरिएंटेशन अटेंड किया था, तभी उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी वो मुझे बिल्कुल मालूम भी नहीं थी कि ऐसे सब कुछ होता है. तो आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल दोज थिंग्स टू लर्न एंड टू अप्लाई. तो वो मतलब मैंने उसके लिए मतलब आई मेड माई माइंड कि आई वॉन्ट टू डू दिस. तो मैंने ऑटोमेटिकली फिर मनी का प्रॉब्लम, तो जब भी मेरा माइंड मैंने बना लिया था, तभी मनी भी क्रिएट हो गया. और मतलब आई डोंट नो, मतलब मुझे लगा था जिससे मुझे हेल्प नहीं मिलेगा, उसने मुझे वो आइडिया दिया. और मतलब मेरे हस्बैंड ने ही मुझे बोला कि तू कैसे कर सकती है, ये कर वो कर, और मैंने फीस भी पे किया. और श्वेता मैम का मैं एक बोलती हूँ कि जब भी मतलब आपको जरूरत है तभी मैम रहती है हमेशा. सिर्फ एक हमको मतलब वो इतनी बिजी रहती है, लेकिन हम वॉइस नोट भी छोड़ते हैं, इमीडिएटली अगर भी नहीं रिस्पॉन्स है, वो दिन खत्म होने के पहले आपको आंसर तो हमेशा मिलेगा. मतलब हम ऐसा एक्सपेक्ट किसी से भी नहीं कर सकते कि इमीडिएटली, अपना दोस्त भी कितना जिगरी दोस्त रहेगा तो वो भी कभी कभी अपना फोन नहीं उठाएगा, लेकिन मैम एंड ऑफ द डे या फिर कभी भी जब भी देखे कि वो मैम हमको हमेशा आंसर करती है. शी वॉज ऑलवेज देयर विद अस, और जब भी हमको चाहिए तभी वो हमको गाइड भी करती है. और मतलब मैं सबको आपको मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पे, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि आपके पास 2 ऑप्शंस है. जैसे मैम ने बोला, आप यूट्यूब पे सब कुछ आपको कुछ भी मिल जाता है यूट्यूब पे. यूट्यूब करो, you will be more confused and you will end up in confusion mind. और कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको theoretical knowledge मिलेगा, वो भी आधा अधूरा scattered, वो भी आपको मालूम नहीं होगा कि ये सही है या नहीं. वो भी आप वेरीफाई कभी भी कहाँ से भी नहीं कर सकते, क्योंकि YouTube पे सिर्फ वीडियो डाल देते हैं और उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं मालूम. कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी जो है चीज, वो ऊपर ऊपर का है.
लेकिन एक्चुअल लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है वो हमको मैम ने बोला है, मैम ने सिखाया है, हमारा एक पूरा लेक्चर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भी गया है। तो लोगों को सिर्फ चीजें वर्क करना नहीं मतलब नहीं होती है, नहीं होती, लेकिन उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं वो क्यों नहीं वर्क करती है। तो वो सब चीजें हैं, वो सिर्फ हमको यूट्यूब पे सिर्फ एक हो जाएगा ऐसे नहीं होता है कुछ भी। तो वो क्यों नहीं होता है उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं, वो हमको मैम ने समझाए। और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि ज्वाइन द कोर्स, श्वेता मैम इज ऑलवेज देयर, वो आपको बताएंगी। और आपको अगर लगता है कि मैं इतने सारे पैसे कहाँ से, तो वो आप अगर आपने एक बार मन बना लिया तो ऑटोमेटिकली वो पैसा भी आपको मतलब मैनेज होता है, सब कुछ क्रिएट होता है सब कुछ। और यू विल गेट हैंड होल्डिंग सपोर्ट। और ऑफ कोर्स हमारे बैच में जो अभी हमारे मतलब बड़ी से हम जो सब कुछ जो सब हम भी एक दूसरे के साथ बहुत सारा शेयर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। और कोई भी ऐसा नहीं है कि मैम भी नहीं रहेगी कभी, लेकिन हम एक दूसरे के साथ शेयर करके हम एक दूसरे को डाउट पूछते हैं। तो हम बहुत ज्यादा लर्न भी करते हैं एक दूसरे से। तो अभी चॉइस आपका है सबका कि आपको क्या करना है, और डिसीजन जल्दी ले लीजिए। बहुत सारी चीजें अभी हो रही है ग्रुप में, हमारे कैश के बैच में, उसका बेनिफिट आप लीजिए। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें भी होने वाली है आगे भी, तो आपको आपको सबको उसका भी बेनिफिट मिल जाएगा। थैंक यू केतकी। एंड दो हमने एनकैश 2 मंथ्स पहले स्टार्ट किया था, जो लोग नया अब ज्वाइन करेंगे हम रीस्टार्ट करेंगे पूरा करिकुलम। ये बात मेरी ऑलरेडी करंट बैच होल्डर से हो चुकी है। सेकेंड थिंग विच इज नॉट देयर ऑन द पावर पॉइंट इज दैट आप लोग कभी भी एनकैश का पूरा प्रोग्राम एक बार रिपीट कर सकते हैं इन योर एंटायर लाइफ विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा फीस। एंड थर्ड थिंग, एनकैश के करिकुलम में जितने वर्कशॉप्स इंक्लूडेड है, जितना कंटेंट इंक्लूडेड है, सेपरेट वर्कशॉप्स अगर है जैसे डी क्लटर है या हो अपोनो था, ये सब आपके लिए फ्री होता है। आई डोंट चार्ज डबल। इनकैश का मतलब है इनकैश का करिकुलम आपको यूं का यूं मिलता है। So they are always available to you even outside. Unless and until हम किसी और टॉपिक पर मुझे लगता है ये क्लैश करेगा आपकी करंट लर्निंग से, then I tell you to skip it. So वो 1-1.5 साल में जो भी हम कंटेंट नया करेंगे, अगर कुछ वर्कशॉप चल रही है तो you all obviously have your own choice of entering into it. मीनू जी, पहले रूपाली जी का शेयरिंग ले लो मीनू जी, फिर आपका ले लो, 2 मिनट चलेगा। ओके रूपाली जी आप अनम्यूट कर लो। Yes, ma'am. Good morning, everybody. I'm Rupali. वैसे तो बाय प्रोफेशन हम टीचर है, मैं टीचर हूँ, लेकिन मैंने मैम से बहुत कुछ सीखा है, जैसे रूल्स, मोक्ष वर्ड, थीटा, यंत्रा, मंत्रा, स्विच वर्ड, जो भी मैम की कोर्सेज हैं, आई हैव लर्नड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स। लेकिन मैम से जुड़ने से पहले अगर मैं कहूँ कि टीचर होने के बावजूद भी आई थिंक मैं 0 पे थी, अब 0 से आगे बढ़े हैं। मेरे लिए आई कैन नॉट डिफाइन माई सेल्फ, हु एम आई, व्हाट आई एम, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मेरे अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी थी, मैम ने वो जगह दी है। शी मेड मी रियलाइज कि कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। मेरे अंदर जो डर था, आई एम नॉट गुड एनफ, आई एम नॉट गुड, और साथ में पीपल प्लीजर मेरे अंदर बहुत ज्यादा थी। और इस कोर्स के बाद, एनकैश करने के बाद, आई हील्ड माई रिलेशनशिप इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल स्टिल काफी हद तक हो रही है। इमोशनल, खासकर बहुत इमोशनल थी। लोग क्यों ब्लेम करते हैं, कहाँ पे हम लैक कर रहे हैं। आजकल मुझे इतना पता है, आई टेक माई फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 100% मी, इट इज आई, व्हाट आई हैव टू डू, और मुझे कैसे चेंज करना है, ये मुझे इस एनकैश करने के बाद, यस आई हैव डन इट। उसके बाद आई स्टॉप रिएक्टिंग टू द पीपल, आई डोंट इवन, आई डू, ऐसा नहीं है कि हम किसी को मतलब आई डोंट रेस्पेक्ट द पीपल, आई डू रेस्पेक्ट द पीपल, बट ये मेरी चॉइस होती है, जो मुझे करना होता है वो करती हूँ। एंड श्वेता मैम में एक बहुत अच्छी चीज है, शी गिव्स मोर व्हाट शी प्रॉमिसेस। और हाँ, दो शी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, मुझे तो बहुत डांट पड़ती थी, लेकिन यस, उनकी डांट से आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स, हीलिंग से मैंने सीखा है, और मैम प्रैक्टिसेस बहुत करवाती है। होमवर्क तो यस, छूटना नहीं चाहिए मेरी उनकी होमवर्क, आई हैव टू डू इट एनी हाउ।
भले ही मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता था, मेरे पास सबसे ज्यादा इशू होती थी टाइम मैनेजमेंट। मेरे को बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि मैं टीचर हूँ, और मनी इश्यूज भी थे। मैम ने वो भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थ्रू कम्युनिकेशन, 1-to-1 कम्युनिकेशन। बहुत सारी चीजें मैम ने मेरी क्लैरिटी दी है, मुझे एक रास्ता दिया है, रास्ता चुना जो मैम ने मुझे दी है। एंड रियली आई एम वेरी थैंकफुल टू मैम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू अगेन मैम, लव यू मैम। आप मेरे लिए एक एंजल है मैम, रियली मैम, थैंक यू सो मच। एंड रियली पीपल, आई एम टेलिंग यू, जो भी यहाँ पे आए हैं, एनकैश जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसलिए नहीं कि आई लव मैम, इसलिए कि अगर अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है, प्लीज डू दिस प्रोग्राम, क्योंकि यू डू नॉट नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू मिरेकल्स। सच बता रही हूँ, ये मैं अपने दिल से बता रही हूँ, ये इसलिए नहीं कि मैं मैम के लिए बोल रही हूँ, बट ये मैंने अपनी लाइफ को खुद चेंज होते हुए देखा है। एंड पीपल यूज्ड टू आस्क मी, भैया ऐसा क्या कर लिया, क्या खा लिया तुमने, क्या होना आ गया तुम्हारी जिंदगी में। ये चेंजेस हैं मेरे लाइफ में। तो इफ यू वांट टू चेंज योरसेल्फ, मैं सच बता रही हूँ, ये 1 ईयर प्रोग्राम करने के बाद ना, आप अपने अंदर, लोग तो बाद में बताएंगे, खुद को चेंजेस महसूस करेंगे। एंड आई रियली हैव डन इट। और फिर भी मुझे लगता है कि मेरे अंदर अभी भी कमी है, जो मैम अभी मेरी सारी क्लटर निकाल रही है, मेरे कचरा निकाल रही है अभी भी। स्टिल आई एम देयर विथ मैम। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू रूपाली जी, लव यू टू। एंड मैं एंजल के साथ में ना डंडे वाला एंजल ऐड कर दिया करो, लोगों को गलतफहमी हो जाएगी। People should be very clear on what we offer. Yes, Meenu ji, quickly your sharing and then let's take question answers. हेलो एवरीवन, मैं श्वेता मैम की स्टूडेंट हूँ एंड आई एम प्राउड ऑफ इट कि श्वेता मैम मेरे साथ हैं मुझे गाइड करने के लिए। मुझे बहुत खुशी होती है, यूनिवर्स ने एक बहुत बड़ा गिफ्ट मुझे ये दिया है। 2020 में 2018 से मैं दिमाग में कुछ क्वेश्चन घूम रहे। मीनू जी आपका इंटरनेट बुक कर रहा है, वॉइस बीच में चली गई थी। फ्रीज हो गए हो आप। पता नहीं क्यों कर रहा है। वैसे भी मीनू जी आपका तो अब आ रही 36 का आंकड़ा है इनकैश के साथ, आपके इंटरनेट और आपके हेडसेट का 36 का आंकड़ा। ऐसा हो सकता है दो में से एक चीज गड़बड़ आनी है। आज वॉइस ठीक है तो इंटरनेट गड़बड़ है। हाँ चलो अब ठीक है, बोलो। हाँ, आज सुबह से थोड़ा सा कर रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम। तो हाँ, तो 2018 में जब मेरे बच्चे बड़े हो गए और मुझे लगा मेरी खत्म हो गई हैं, अब मेरे पास मीनू जी कैमरा ऑफ कर दीजिए अगर कैमरा ऑफ कर दो। मीनू जी कैमरा ऑफ करो फिर बोलो। स्विच ऑफ योर कैमरा and then speak. Now speak. Unmute karo and speak. अरे भाई मीनू माता। ओके, आई थिंक उनका कोई अब आ रही है आवाज? हाँ जी, अब क्लियर है, बोलो। हाँ, अब मैं ट्राई करती हूँ। आज बहुत चीजें, कोई बात नहीं, अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन शेयर योर, यू कैन मेक अ वीडियो एंड शेयर इट। भी ये है कि आई एम नॉट इरिटेटिंग। मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं है, रहने दो आप मीनू जी, लीव इट। आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। यस मैम, यस मैम। ओके, एनी क्वेश्चंस यू वांट टू आस्क देम? मेथोडोलॉजी, हाउ डज इट इफेक्ट? You want to ask, please ask them now. Unmute and ask. Quickly, I'm giving you all two. Yeah, Shweta ji, this is Nupur. Ji, Nupur. I have a quick question. So, what I have heard, like the program includes EFT and chakra and other healing techniques as well. Right. So, if I'm doing the course separately, it will be a different module, or it will be the same, No, like so I've enrolled for the chakra. So basically the difference is कि जो आप 5 day का चक्र अगर आपने enroll किया है, so that's the self healer level. And what you will do in the Encash self healer practitioner and trainer. So in such a case, if you are registering for Encash, I will tell you कि back out
from the current batch, and I will adjust your fees in the Encash का fees. Because करोगे ही करोगे, और अभी Encash वालों को मैंने रोका है ये वाला बैच चक्रा का करने से, because we are at a different point. It will clash with their studies. So anybody who has registered for chakra healing and wants to go for Encash, आपको अगर आप Encash join करते हो तो ये फीस आपका जो 4600 का है वो Encash में adjust हो जाएगा. Everyone. So then I will not do the chakra. I will Not wait. now. You will wait, Okay. because अब हम different segment में चलेंगे. देखो ये एक separate program है. ये एक Got it. chain है. We'll go layer by layer and we'll work on it. Yeah, no, definitely chakra and EFT was in my mind, these two things. So good, that's clarified. And how much commitment is required? Like you said, more than a year. So daily basis, you said 1 hour of self-studying or work or homework. Other than that, like the classes will be on daily basis? No, classes are going to be twice a week. आपके batch के लिए, इस batch के लिए it's Wednesday, Thursday, 9 to 12 in the morning. Okay. Just one second. Yeah. Sorry, विनय बार-बार phone कर रहा है, so just needed to disconnect. So basically क्या होता है? श्वेता आप हो? Can you see me now? Yes, we can see you and hear you as well. Yes. Basically, classes are Wednesdays and Thursdays, 9 to 12 only. Live classes तब होती हैं. बाकी का जो आपका है, it is going to be 15 minutes to 1 hour of self work every day, जिसमें आपका homework है, recordings को दोबारा देखना है, कुछ आपको self realization exercises करना है. See, इसमें homework is all on the basis of cross questioning yourself, going into self realization modes. Concepts को discuss किया, उसी concept पे और सोचना. So it's not going to be writing a thesis. It's going to be very related to what we are doing day to day. Okay, got it. Yeah, thank you so much. You're welcome. Sweta, can I ask you a question? हाँ जी, please go ahead. हाँ, जैसे आपने बताया कि जो भी आपके ongoing classes होंगे वो भी इसमें सारे free होंगे. हाँ जी, नहीं सारे ongoing नहीं, जो इसके curriculum के अंदर है वो ongoing. Okay, okay. So like Rupal, suppose करो इसमें shadow है, inner child है, chakra है, EFT है, ho'oponopono है, hermetic principles है, ठीक है? So अगर ये workshops होंगे तो ये आपके included है. जैसे हमने declutter किया, declutter is a part of the Encash. What we do, we don't call it declutter, but it's a part of it. So declutter is free for all of them. Okay. I also need a Dandewali teacher, so I will. So Sandhya ji, if you are in declutter, you can shift. If you go to Encash, your fee will be adjusted जितना आपने pay किया है. That adjustment for everybody, don't worry. Yeah. Shweta, I think Toshi ma'am was saying something. Sorry, Toshi aunty. Thank you. Toshi aunty, आप कुछ कह रहे थे? Sorry, I didn't. No, I wasn't saying anything. Okay. Because I have very low power left in my. Any other question? कोई बात नहीं. There's 5 more minutes, I think. Any other question anybody has? So declutter is a part of Encash, not declutter करके, but because हमारा काम ही declutter करना है अपने आप को, तो हमारा काम ही होगा. वंदना त्रिपाठी जी, I am in declutter and chakra. एक बार ही आप मेरे को question बताओगे अपना verbally? Sorry Shweta, but कब से start होगा ये? Next week. Okay. For those who are joining, you have 1 week's time to complete all your logistics and register. तो हमारी actual class परसों है, but because आज ही orientation हुआ है, मेरे last week मेरी अपनी workshop थी therapy की upgrading, तो I couldn't do this last week. So since it is this week, I'm giving you all a week's time. Wednesday, Thursday हम revision करेंगे अपना अब current batch के लिए, ताकि इन लोगों का class miss नहीं हो. But next week Wednesday से आपकी classes हैं, but make your decisions now. मतलब now से मतलब आज में बना लो. Sorry, Kunjan ji, आप कुछ बोल रहे थे. Vandana ji, can I have your question first, please? Vandana Tripathi.
हाय एक्चुअली मैं जैसे डिक्लेटर वाले में हूँ, सेल्फ अवेयरनेस क्लास में, और मैंने अभी ये थेरेपी जो चक्रा थेरेपी है उसमें इनरोल किया है. तो कैन दोज क्लासेस बी लाइक द फीस विल बी both of them will be adjusted. Declutter and chakra दोनों adjust होगा. And Vandana, you will not do chakra in this batch. Then you will do chakra with Encash, because अभी I don't want any, वो हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि हम ओवरलैप मेथोडोलॉजी करें. डीक्लटर कंटिन्यू करोगे, चक्रा कंटिन्यू नहीं करोगे. और जो लोग एनकैश में अब रजिस्ट्रेशन लेंगे, even if you are not a part of declutter, you will be added to the declutter part without any payment. Exactly, that's right, because the 5 days I'll be doing that, and again I might have like so many other things. No, I will not be putting you all like this. So trust me, that is structured, that I know how to give you all in a better format. So once you are registered for Encash, I will take the needed steps उसी हिसाब से. बट मुझे अभी ये पता नहीं है कौन है कौन नहीं. जैसे जैसे registrations आएंगी, I will know where you are registered. Like see, you are there, Nisha ji is there, Nisha ji is also registered for Chakra. So बहुत सारे overlaps हैं, वो overlaps में workout कर दूंगी. But rest assured, कोई content Encash का होगा तो उसका आपको pay नहीं करना है. जो paid fee है वो adjust हो जाएगी, जितनी आपने pay करी है उतनी. Okay. Yes, any other question? Any other question, guys? Quickly ask me. Fatafat पूछ लो, please. No question. Shweta ma'am, I can leave? Yes, everybody can leave. Thank you. Thank you. Yes, who's this? Shweta ma'am, yeah, this is Nupur. So I have a class morning for the chakra healing. Sorry, your evening time. I'm not sure whether I've received the Zoom link or not. It will be on the group, WhatsApp group. Okay. Okay, fine. Thank you. You're welcome. Chaliye, thank you everybody for being here. Now Thank it's you time so for much, you to Shweta. make a choice. Jump or not jump. Mera kaam done hai. Choose how you want to move into your life. Thank you everybody. Have a great day and see you all. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so Shweta. much. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you, Shweta. Bye. Thank you, Kitu, Toshi auntie, Meenu ji, Kate. Thank you so much. Thank